Good morning, everyone. It gives me immense pleasure to welcome our today's esteemed guest, Dr. Manisha Ma'am, respected Director Dr. Rohan Dahiwale Sir, all faculty members and dear students for today's session on career opportunities in human resource management, organized by Rajgad Institute of Management Research and Development. This session is specially organized to give our students clarity, direction, and real world insights into one of the most dynamic and people centric domains, human resource management. To guide us on this journey, we are truly fortunate to have with us a guest speaker who is not just a highly experienced faculty but a mentor, trainer, researcher, and transformational leader with an exceptional blend of academia, industry, and consulting experience. Our esteemed speaker, Dr. Manisha Rajendra Kulkarni Rupnavar, brings with her over 25 years of rich experience spanning teaching, research, corporate training, coaching, and organizational consultancy. She currently serves as an associate professor at IICMR, along with being the IQC coordinator, research guide, HOD MBA, and a valued member of governing council. Dr. Manisha Ma'am is widely recognized for her expertise in organizational management, human resource management, behavioral transformation, design thinking, career counseling, and soft skills development. She has delivered impactful corporate training programs for OEMs, MNCs, MSMEs, and startups, and has drafted HR policy manuals and SOPs that have contributed to institutional excellence. She is also the creator of innovative models like Explore to Excel, the mentor mentee system, and the Human Quotient Measurement Scorecard, all aimed at bridging the gap between academia and industry. With 17 plus research publications, three authored books, multiple national level awards, and an active involvement in NAC accreditation, FDPs, QIPs, and MBA syllabus design. Her journey is a true example of managerial excellence and service oriented leadership. Beyond achievements and titles, what truly sets her apart is her deep commitment to transforming lives through education, coaching, emotional wellness, and value based leadership. Her mission to touch and empower lives resonates deeply with the purpose of today's session. We are confident that today's interaction will provide our students with practical insights, career clarity, and inspiration to shape their future in the HR profession. I welcome you, ma'am. So, thank you so much, Prachi ma'am, for such a elaborative and wonderful introduction. I was expecting a brief one, but still, thank you so much. I think I should thank to the director, Rohan Dahiwade sir, for this opportunity. And sir, good morning and happy thoughts. How are you, sir? Yes, I'm fine, ma'am. Great. It's a really pleasure to have you. Yeah, same here. And I'm really happy to face your students and discuss and share my experience with all your students. Yes, our Thank you. students are mostly from rural background. Okay, and Okay, HR students they have joined. Okay, okay, only we have like for HR, marketing, business analytics. So all specializations we have called the experts from the specializations from industry and academician. So today only HR students they have joined. So okay, mostly second year HR students or first year students they are in confused whether they go for like HR specialization or some other specialization. So few of the students who are keen to join as HR specialization they have also joined today. okay, great. Yes, thank you. I understood the exact context. Actually, Manjari ma'am also has given me very clear idea about this. So accordingly, I have I will be taking making them to realize and understand exactly what is HR and how they have to face the corporate reality. So I will try my best, sir. And once again, thank you so much for giving this opportunity. And with your permission, I will start now without Yes, yes, wasting thank you time. so much. Yes, you can Yeah, start. yeah. And thanks to Manjari ma'am also for a wonderful coordination. And now, students, are you all there? Can you all hear me? Am I audible? Please say yes or no. Yes, Anybody ma'am. please Yes. unmute? Okay, so warm good morning to all the students.
Good morning, ma'am. Good morning. Okay, so now we are going to, I will not say I'm going to teach you something. Uh, we will understand and, understand each other. Ki what are your expectations and whatever I know about human resource management with whatever experience I have, I'm going to share with you all. Okay, being an HOD in academics for more than 17 plus years of experience, I have met a lot of students who have different requirements and who are coming from rural background. Okay, before I go further, प्योरली इंग्लिश में बात करूं या इंग्लिश हिंदी दोनों चलेगा? व्हॉट इज दॅट यू वॉन्ट? हा, मराठी चालेल. मराठी माझं एवढं व्यवस्थित नाहीये, बट व्हॉट एव्हर यू से आय विल डू इट. एनीबडी कॅन अनम्यूट अँड स्पीक. हॅलो, एनी स्टुडंट्स कॅन अनम्यूट म्यूट अँड स्पीक. या अंबिका, डू यू Yes, वॉन्ट ma'am. मी टू स्पीक इन ओनली इन इंग्लिश और हाउ? English, Hindi, ma'am, chalega. इंग्लिश Ma'am, we हिंदी are चलेगा? comfortable in both language. अच्छा, इफ इवन इफ इट इज इन ओनली इन इंग्लिश इट इज ओके फॉर यू ऑल? Yes, yes. Yes, Okay, thank you then. So today's topic is very important, and as your director very rightly said, that you all are, first year and second year students. May I know how many first year and second year students are there? First year students, how many students are there? Acha, Gayatri, acha, all the first year students, can you please raise your hand? Okay. Okay, so there is a combination of first year and remaining all are second year students, right? Rishikesh is first year, okay. Okay. So there is a combination of first year and second year students. So, when I discuss with you, Manjari ma'am, by understanding that both MBA first year and second year students will be there, so I have uh, uh, made my presentation. See, let us understand this. What I'm going to do is I am going to give you a complete journey of what HR career opportunities will be. At the end of the session, any kind of question you have, you can definitely ask to me. Is it okay to you all? Are you all ready? Yes, ma'am. Yes. Okay. So how you want my session to be? कि whether you want me that session to be very monotonous कि मैं आई मुझे बहुत अच्छा आता है मैं सब आप लोग को सिखा के चले गए, an interactive and informative insightful session. How you want? Yes. आप कैसे चाहते हो? Yes. Anybody Interactive. please unmute and speak. कैसा चाहते हो? Interactive. Interactive? Okay. So may I know who's this? Yeah, this is Mahesh. Mahesh, ma'am. Okay, Mahesh. So wonderful Yeah, that if you want, you said that on behalf of everybody, you said that you want this session to be interactive. So during the session, I may ask some questions. So I request all the students to please keep yourself completely receptive, tune to this session, because I guarantee to all of you at the end of the session, you will get some major insights, some basic clarity about whether you should go for HR or whether you should not go for HR. And if you are in HR, how you are going to proceed further. Is it okay? So now I'm going to actually officially start this session. Career opportunities in human resource management. Now, can you all see my screen? Is it clearly visible? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. So now, what is the difference between job and career? Is there a difference? Hello. How many of you say that there is a difference? Okay. Can anybody please unmute and speak?
Ma'am, job is a part of career. Job is Job is a part of career. job is part of career. Okay, good. Exactly what is the difference? As a job is a part of career. मतलब क्या है? क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? Job चाहिए क्या career चाहिए? What is that Job you is the want? responsibility, and Okay. career is the domain in which the responsibility your So career is a wish domain. to Oh, possess. okay, good. Apart from that, is there anybody who want to share? Acha, you all are doing your MBA, right? What is it you want? A job or a career? What is it you are expecting from your director, Rohan sir? Job or a career? Quickly, because I have so many slides to share to you. Career. Yes, career, 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 career. career. तो मतलब फिर exactly उसका difference ये है when you are saying a job, you are restricting yourself something which is very instant. Okay, and you are getting a position of a talent acquisition management representative or management executive talent acquisition in one of the IT companies. So that is a job, and you are joining blindly. Actually, what happens when the placement happens? There are some series of companies that come to your college and they give different kind of opportunities. That time, if you are focusing only on job, then you get confused. Am I supposed to join in manufacturing companies, or should I go for IT companies, or should I think about the BFSI? So that time you have a problem. So in order to avoid that, for those students who are in MBA first year, you are lucky, you are receiving the session now itself. So you keep in your mind, you have to think about career and not the job. Because when you are thinking about a job, you will end up in a place where that may or may not be appropriate or suitable as per your personality. Then what happens? Then there is a lot of shift. Then your resume go in a very different way. Then the corporate will not accept you, and your progress, future progress, will be very, 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 very slow. Do you all want this kind of progress? Nobody will say yes, right? Do you want anybody want a slow progress with the confusion of a job and a career, or only by thinking about a job? Do you want like this? No. No. So if not, then from this today is 6th February 2026. From today, communicate to your mind that you must think about career and not a job. Okay. In this 1 hour, as a coach, a career coach, and academician, I will try to give you some major insight on how to map your career. Okay, is that okay? Is it making sense? Is it making sense, students? Are you all with me? Okay. So now this is a typical structure of an organization. How many of you say that you wanted to be always in the middle management? सबको middle management में जाना है क्या? Somewhere you wanted to see yourself as a president and vice president. How you see yourself? Yes? How you see yourself as a CEO? मतलब you always wanted to remain as a at the lower level, or you wanted to go to the upper level? How you want? I am seeing your chat. You can even everybody can type in chat also. How you want yourself? Where you wanted to go in the lower level or upper level? Okay, step by step. Okay, but where you want to go after a period of 10 years? Still, you wanted to be in the lower level, or you wanted to go to the upper level? You those who say that after a 10 to 12 years, I want to see myself in the upper level, right? UL, UL.
Not even if you don't type upper level, it's okay. You can write UL. Okay. So almost Mahesh, Bhushan, many of them are saying ki UL, UL. Only four of them are there. What about others? I want everybody to respond so that I can understand. So as you all are saying, after a 10 or 12 years of experience, you wanted to go to UL. Okay. So for that, we will understand, are you really capable to go to that UL level? For that, I am going to give you three situations, and you are going to read the situation, understand the situation, and decide. So, are you here at this moment? Dekho, wherever you are now, it is okay. But understanding that I am in this situation is extremely important. Once you understand, then you can go to the further level. Is it making sense? Is it making sense? If yes, please type yes. If it is making sense. Okay, so now I will show the situation. Please read it very carefully. So you all are here to create a huge jump like this fish from the small academic world to a huge ocean of corporate, right? Corporate world is very harsh, and you will see all the practical shrewdness and the harsh reality in corporates. It is not like how you get the spoon feeding in your institute, right? In your institute, your director, your faculty members all will be giving you a lot of information and spoon feeding you. But that's not going to happen in corporate. How it is going to happen? So for that, let us make a understand the situation. कि ये situation में क्या समझ में आएगा आप लोगों को कि आप आज की अवस्था में देखो, हर एक जो भी स्टूडेंट्स इधर ये सेशन अटेंड कर रहा है, हर एक को एक ड्रीम है, राइट? एवरीबडी इज हैविंग देयर ओन ये कि लाइक मुझे ना एमबीए करके बहुत बेस्ट बनना है. Many of them might have taken the education loan, and you are here all the way from a rural background, coming all the way to Pune and investing your time, your money, your parents' money, and you wanted to fulfill your parents' dream, right? Do you all agree? So अगर ऐसा है, लेकिन लेकिन इस ये सब एक साइड पे है, और दूसरा साइड में you have a lot of fear, anxiety, or some so much of things. Okay, so now you all should reflect upon these things. Do you all remember why you have taken admission in MBA? I hope that you remember. Main objective क्या है? आपने ये एक साल खत्म हो गया जो फर्स्ट ईयर का, और 2 साल खत्म होने वाला है सेकेंड ईयर का. सो हैव यू डिसाइड अपॉन रोल मॉडल? आपने ये सोचा है, डिसाइड किया है कि वेदर यू वांट अ फाइनल प्लेसमेंट, एंड इफ यू वांट, which where you want, which is the sector where you wanted to go, and what kind of job role you are preferring. Entry level job, there are different options. Out of that, have you decided anything? Okay, so ये डिसाइड करना ये एक है. ये सब हो गया एस्पिरेशन. वो एस्पिरेशन को एक्शन में बदलने के लिए, डू यू हैव एनी प्लान फॉर दैट? How much time you are investing, in preparing yourself? So these are some questions which I request you to take a pic, or if this PPT will be there, you uploaded in a YouTube channel, go through it and give answer to yourself. Okay, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है? Because at this moment you all should think about it before understanding the career opportunities of HR. Do you all agree? Do you all agree? Okay, so now what you are going to do now? So whenever I address my second year students, I always find this gap. So that's what I have given this showing the same slide with you also. There is a gap within yourself. Do you all agree? Gap क्या है? आपने MBA तो स्टार्ट किया है क्या? All the students who are here will accept. MBA तो स्टार्ट किया है, अरे पता ही नहीं चला मैम फर्स्ट ईयर कैसा गया. स्टिल हमारा पोस्टपोन हो रहा है, प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, रील्स में टाइम जा रहा है, इंस्टा में टाइम जा रहा है, वेब सीरीज में टाइम जा रहा है. सो डू यू ऑल अग्री देयर इज अ गैप? देखो, जिस दिन आप इंडक्शन में फर्स्ट डे, हाउ यू वर विथ लॉट ऑफ जोश कि ऐसा करूंगा वैसा करूंगा वैसा करूंगा, लेकिन पता ही नहीं चला. सो मच ऑफ एक्टिविटीज इन एमबीए, एंड फाइनली यू सेइंग कि अरे फर्स्ट ईयर खत्म हो गया. सो डू यू ऑल अग्री दैट देयर इज अ गैप बिटवीन योर बिगिनिंग एंड योर फाइनल डेस्टिनेशन, जो आप अचीव करना चाहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट बोलेगा कि मैम आई वांट मिनिमम 4 लाख ऑफ पैकेजेस.
Okay, 4 lakh package is very good, but have you planned anything? Okay, आपने प्लान किया तो प्लान के लिए प्रिपरेशन किया क्या? So that is the second point. So what is it? It is saying, have you planned? There is a gap between your planning and your preparation. Okay, and there is a gap between your actual expectation. आपका ड्रीम क्या है? 5 lakhs, 4 lakhs, 3 lakhs, and actual action आपने लिया है क्या? For example, if you're coming in a rural background, how is your English? Have you developed? Daily, are you looking into reading economic times? Have you decided anything, and are you doing it consistently for the purpose of achieving this goal, this dream of yours? Or you're having so much. So even when I'm talking to you, you're wondering so many things. So whether there is a alignment with your thoughts and the same thoughts has been expressed, or there is a gap again. अगर आप जो सोच रहे वो आप इंटरव्यू में नहीं बोल पाएंगे, so you will be rejected. Then students comment कराए कि मैम मेरा ही क्यों नहीं सिलेक्शन हो रहा है. Even the one who score very good, a topper, they also have this problem because there is a gap between the thoughts and the expression. Okay, then there is a gap between your feeling and your communication. How many of you say that, man, this slide is giving us some deep insights, some understanding about our own self? कितने लोग बोल रहे हो? If yes, please chat. कि मैम, yes, we are getting some understanding. कि कुछ gap है. Or how many of you will say that, मैम, yes, there is a gap. तो अगर gap रहेगा तो yes करके लिखो. Okay. आपके डायरेक्टर ने सबसे पहले यस डाल दिया. यस मैम, आई कैन अंडरस्टैंड. यस, देयर इज अ गैप. ओके, साक्षी, महेश. ओके, even if it's type only capital yes, it's okay, or small, any kind of only yes. But I want everybody to accept, everybody to understand this. So if there is a gap, then congratulations to you. At least you understood today on 6th of February that there is a gap. First year students, you have 1 year. Second year students, you have one more semester. One more semester bhi nahi, almost towards conclusion. But at least now, जाग जाओ. Okay, open your eyes, understand the reality. Okay, for that we are going to understand something. So this is situation one. Situation one का student ऐसा है कि they have always regret and guilty feeling about the past. आप ऐसा है कि देख लो, चेक कर लो. मैं at the end of this situation I will ask you a question. ऐसा कुछ स्टूडेंट है कि अभी आपका अवस्था ऐसा है कि पास्ट के बारे में सोचते हो तो ऐसा लगता है अरे काश मैंने अच्छा किया होता, या अरे ऐसे नहीं करना चाहिए था, आई हैव वेस्टेड टू मच ऑफ टाइम, एंड सो यू आर ऑलवेज हैविंग regret and guilt feeling regarding the past. Okay, and you are having anxiety about the future. कि बहुत सारे एंग्जाइटी है कि लाइक मेरा क्या होगा, मेरा प्लेसमेंट मिलेगा क्या नहीं, अभी एचआर के लिए जॉब नहीं है बोल रहे, मार्केट ऐसा है, स्टॉक वैसा है, विल आई गेट इट और नॉट, विल आई बी इन अ पोजीशन टू अचीव और नॉट. वो सारे एंग्जाइटी फ्यूचर के बारे में. लेकिन इसके वजह से, पास्ट का गिल्ट के वजह से और फ्यूचर का एंग्जाइटी के वजह से प्रेजेंट में डर लगता है और बहुत सारे स्ट्रेस आता है, जिसके वजह से एक्शन ही नहीं कर पाते, सो जाते, or wasting your time in Insta, online. So I will say, so in social media or on online, पता ही नहीं चलता टाइम कैसा जा रहा है, क्योंकि you have a fear of future, sorry, anxiety about the future and regret about the past. How many of you say that, okay, ma'am, I belong to this situation one? और ओके, आई विल एक्सप्लेन मोर. यहाँ पे कैसा है, इनका अजम्पशन है कि सिर्फ कंपैरिजन, अरे उसको मिल गया, मार्केटिंग वाला को 5 लाख मिल गया, मुझे नहीं मिला, मैंने अच्छा लेके सही किया क्या नहीं, और फियर ऑफ रिजेक्शन है. अजम्पशन क्या है यहाँ पे, ये सिचुएशन वन वालों का अजम्पशन है कंपैरिजन करना, जेलसी फील करना या रिजेक्शन फील करना, और एक अजीब सा इनसिक्योरिटी है कि क्या होगा, मेरा लोन मुझे ये हो जाएगा क्या नहीं, मेरे मम्मी पापा को ड्रीम में फुलफिल करूंगा क्या नहीं. सो दीज काइंड ऑफ थॉट्स आर देयर. एक्शन क्या है, जीरो. प्लानिंग होगा तो भी प्रिपरेशन नहीं है, प्रिपरेशन होगा तो प्लानिंग नहीं है. और बिहेवियरल इम्पैक्ट इसकी वजह से क्या होता है, एंजाइटी एंड कंफ्यूजन. रिजल्ट क्या है, पोस्टपोनिंग द एक्शंस. आउटकम क्या है,
leading to procrastination. So everybody knows about this, right? So how many of you feel that you belong to situation one? Let's be honest. कि अरे क्या डायरेक्टर है, हमारा मैडम भी है, हम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा मत करो. Be honest to yourself. So you can type in chat if you are there in situation one. अभी इसमें ऐसा एक मजेदार बात ये है कि those who are in situation one will not even take an action to write मैम मैं वन में हूँ. Do you all agree? Yes. ठीक है. So all those who are sitting here, both first year and second year, ask yourself, do I fall in this situation one? If your answer is yes, don't worry. Accept it. Okay, आज पता तो चला. And now this moment, immediately take a decision that I should now shift to other situation, because if you are there in this situation, you will always be in the lower level of the management. The more you work hard, the more you will be there in this, because internally you are having all this kind of problems. Is that clear? So this person, देखो कि मैंने बोला है the arrow is not hitting exactly at the center. This particular situation, if you are facing, you will be always see yourself at the lower level. ठीक है? Those who are saying कि मैं lower level में है, please think, reflect honestly. इसमें गलत नहीं है, हो सकता है. मेरे साथ भी once upon a time था. Okay, everybody, even your faculty members, your director, they all will all have some kind of regret, some kind of anxiety. It's okay, but उसे understand करना, आगे बढ़ना, that is important. So those who are there in this situation one, please decide today that you have to shift to other situation. Is that clear? Is this making some sense to you all, students, before understanding the opportunities available in HR? Okay, so now what we will do is, thank you Rahul, Bhushan and Rohit. Okay, now we will see the situation 2. Situation 2 क्या है? Past का again regret है, guilt feeling है past के बारे में. Future का कैसा है? Goal decide किया है. क्या goal decide किया है? मुझे ना HR तैयार कर दिया है, अभी मुझे HR में अच्छा job मिलना चाहिए. That's what you have decided. And present action ले रहे हो, but so much of information is available in the chat GPT, with all AIs, with all the online ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी कोर्स अटेंड करो, ये भी कोर्स अटेंड करो, ये भी कोर्स अटेंड करो, and you're doing so many action without any not direction, and you are saying कि अरे मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, मैं जब कंपनी में जा रही हूँ तो मेरा रिजेक्शन क्यों हो रहा है, और आई एम अनेबल टू फेस द कंपनी प्रॉपरली, और why I'm getting nervous about my future. Are you getting it? So how many of you feel that you are in situation 2? उसका assumption क्या है? इनके पास वो एक ओवर कॉन्फिडेंट रहता है कि आई कैन इजिली क्रैक इंटरव्यू. ओके, ये लोग सोचते हैं कि हाँ इंटरव्यू तो हो जाएगा, एंड दे आर ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर एम्बिशियस, बट प्लानिंग नहीं है. और प्रिपरेशन क्या है? दे डू लॉट ऑफ प्रिपरेशन, बट इन ऑल सो मेनी डायरेक्शन. देखो अगर डायरेक्शन नहीं है, अलाइनमेंट नहीं है, तो चाहे जितना आप प्रिपेयर करेंगे, so it is like, I will give you an example. So if you are standing at the center of a rope, a place where there are 3 diversions, okay, and what is happening, you should decide which is the road you have to go. Now what you are doing, you are walking in the center, mid road, coming back, and then you are going into the right side road, coming back, and then you are going to left side road, coming back, because sometimes you are listening from one of the speaker and accordingly taking action. Sometimes you are listening from a faculty, you are taking action. Sometimes you are thinking about yourself or seeing some reel or some alumni discussion, then you are taking action. तो यहाँ पे कैसा बहुत प्रिपरेशन हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन ही नहीं, कंफ्यूजन है, और यहाँ पे भी एंजाइटी है और डिप्रेशन है. ओके, एंड एक्शन आई सेड कि ऑल डायरेक्शन में एक्शन है. आउटकम एग्जैक्टली आप मुझे क्या करना है वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं. स्टिल यू आर इन अ कंफ्यूज स्टेट. हाउ मेनी ऑफ यू से दैट यू आर इन सिचुएशन 1, 2? Please put it in chat. I think these students can put it.
आज कंफ्यूज हो रहा है कि अरे मैं सिचुएशन 2 में है क्या. ठीक है, मैं क्या करती हूँ, सिचुएशन 3 भी दिखा देती हूँ, देन यू कैन डिसाइड. ओके, आई वांट एवरीबody टू प्लीज all the students to put it in chat whether you belong to situation 1, 2 or 3. ठीक है. So if you are there in situation 2, you always end up in mid-level management. You can see the arrow is there, you are hitting the arrow, but it is not breaking down, going down like the previous situation, but it is going beating around the bush. It is not hitting exactly the center. So then you will always end up at mid-level management. Okay, I don't feel that none of you will like to be always be there at the mid-level management. Okay, so this is also is not the right way of seeing yourself, preparing yourself immediately after MBA. So this is also wrong. Okay, then what is it? So situation 3, you know that you had a lot of failures in the past, but you are learning and understanding from past. You have decided a goal which is specific, measurable, attainable, uh, result oriented, time bound goals, and you have a clear cut career map. And as per your career map, you have decided your skill map, and accordingly you are starting action. So that is about your future. And in the present, what you are doing, okay, so you know that you have learned from the past, and you are having some goal for the future. Accordingly, you are taking appropriate action. So in this situation, what happens? Assumption क्या है, क्या मैं इधर हूँ, so I should work hard and I should plan. So I am wherever I am there. तो मुझे इंग्लिश नहीं आता, it's okay. मैंने कुछ सर्टिफिकेशन नहीं किया, it's okay. So I am here, but this is my goal. I wanted to go there. So this is your assumption. Appropriate action, yes. Perfect planning हो रहा है, preparation proper हो रहा है. Behavioral impact क्या है? Okay. So whatever you are doing, it can be a small, small work, small thing which action you are taking, but you are taking it precisely every day consistently. That is a behavioral impact. So you are having confidence and satisfaction. Result is जो भी आप ले रहे हो कि wherever whichever action you are taking, wherever direction you are moving forward, you are doing with that conviction, because you are having the clarity in your mind. Okay, I want to do this and this is my goal. So obviously outcome क्या होगा? Highest outcome. Because why I'm talking about this, my dear students, कि देखो कि only about understanding career opportunities, ChatGPT will do it, right? Even I can, we will do an exercise of that also. It's so easy, but ये समझना बहुत important है. Otherwise, आप चाहे कितना भी input लेंगे ना, you will not be in a position to move forward. You will be there as you were. Are you getting? Okay, so now this guy, this particular person, if you are in situation 3, obviously after consistently with your progress, you will definitely end up at top management level. Is it making sense? Now my question to you all is, how many of you say that you are in situation 1, type 1? If you feel कि नहीं मैम मैं इतना तो बुरा नहीं हूँ, मैं टाइप 2 में हूँ, तो टाइप 2. And if you feel that yes, I am confident, मेरा सब clear हो गया, तो type 3. So I want the students to please put it in chat. I am seeing your chat because you gave me a commitment that we will have interactive session. Can I see? I'm seeing the chat. May I expect the answer from all the students? Okay, Mahesh is saying 2. Yes, I want everybody to do it fast in order to, because I'm having a lot to share with you. Okay, 2, 3 में confusion है, कभी 2 है, कभी 3 है. Very good. Okay, Bhushan. Rahul saying 3. Okay. Oh, Rahul, congratulations. If you are in 3, very good. Okay, Rahul is saying he is in 3. Yes. यही बोल रहे महेश, राहुल, भूषण ही है इस क्लास में. I don't know about others. So, okay, 2. Rohit is saying 2. Okay. What about others? So they are wondering, are they type करे कि नहीं, whether to take action or not. Right? So you think about yourself, to whether to take action or not. Okay. Ketan is saying 2. Okay. Come on, I want the maximum response. Sanket, 2. Okay, maximum, I think there are 2. Okay.
quickly. Oh, very good, Ramdas. I am surprised to see students in 3 also. Good. I should say to the director, sir, आपका अच्छा स्टूडेंट है आपके पास. Okay, 3 में रामदास है. Very good. Yes, any other students? Okay, from this, okay, how many? Okay, Sakshi is saying 2, okay, 3. Okay, Siddharam बोल रहा है कि I am clear, very good. So there are three students, okay. 3 situation का बोल रहा है 3. Okay, students. Whether this situation is gave you some clarity, some understanding. How many of you feel that you got some shiftings from within? कुछ तो मिला मैम, कुछ तो हुआ. ऐसा कितना लोगों को लग रहा है? अगर if yes, write SS. 2 बार S लिखो. अगर वाकई में कुछ शिफ्टिंग मिला होता तो मतलब आपको कुछ तो समझ में आया कि बिफोर गोइंग टू द कॉर्पोरेट रियलिटी, एंटरिंग इनटू द कॉर्पोरेट. यस, राहुल ने बोला कि यस. This is very important because wherever you are, whatever it is, it's okay. It's okay. Once upon a time, even Manisha ma'am, even the director, everybody were there at that starting point. Now, with consistency, with understanding, with learning, we are here to reach to some point. So, आप जहाँ पे भी हो, that is perfectly normal. First of all, accept it completely, but decide that from today, you will take a step and you will move forward. Okay? So I want everybody to reflect and wherever you are, go to the next level. Okay? So now we will understand we will understand the actual career opportunities available with human resource management. Why I took this exercise? That's what I say. As I said, देखो कि जॉब करना या करियर के बारे में समझना वो सब आसान है. What is extremely important is your internal situation. What you are feeling within, that is extremely important. Because if you are internally not strong, however you plan, whatever you plan, you will end up with a lot of dissatisfaction. फिर आप ऐसा बोलेंगे कि मेरे सामने ना there are so many students who come in front of me and cry कि मैम I am trying very hard but I am not able to achieve this result. और मैम कि you know before going to the interview I am preparing a lot, I am doing this. But बेटा, if you are having a regret about the past और आपको तनाव है or you have an anxiety about the future, then you will not be in a position to crack the interview. क्योंकि your energy matters the most and your energy is developed from within. It's not from outside. Okay, that is the main reason I did this exercise, because the more you understand your internal situation, the more clarity you will get externally. The more clarity you will have externally, the moment you will enter into the interviewer cabin, you are selected. Are you understanding this? Is it making sense? Because it's extremely important. अगर आपको डर लग रहा है कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ तो नहीं होगा. It's not going to happen. Is it making sense? Are you all understanding? Okay, so now we will go to understand the career opportunities available. Okay, so for that, let us understand. We okay. First of all, congratulations to all of them for selecting a HR specialization. For the first year students, if you are still having confusion, you please understand whatever I'm saying. Okay. सबसे पहले when you are an HR, marketing, you will also simultaneously going to see a marketing student. अभी मार्केटिंग स्टूडेंट को देखने के बाद वो मार्केटिंग एक मार्केट में एक मिथ है. क्या मिथ है? और वी कैन से देयर इज सम अजम्पशन इन द मार्केट. एंड व्हाट इज दैट इन द मार्केट? एचआर लिया ना, तुम्हारा पगार कम होगा, सैलरी यू विल नॉट गेट इट. नंबर 1. नंबर 2 ना, वो बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, देन वन डे यू विल गेट यू कैन बिकम एन एचआर. और बहुत पैसा कमाना है, देन गो टू मार्केटिंग. राइट. अभी इधर जितने भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं उनको वही लगेगा कि मैम हमने एचआर ले लिया, प्लेसमेंट नहीं मिला तो. यस, डू यू लगती प्लेसमेंट नहीं मिला तो क्या करे?
क्या प्लेसमेंट मिला, 10,000 12,000 का जॉब मिला तो क्या करे. So these all questions you will have. Okay, it's okay. So, but what I wanted to say is, don't go on any assumption. Ask yourself, what is that you want? Close your eyes a moment. All the first year student, close your eyes and ask yourself, do I really belong to HR? मुझे क्या अच्छा लगता है? People अच्छा लगता है? Process अच्छा लगता है? या technology अच्छा लगता है? What is that I love the most? I wanted to be among the people. I wanted to be alone. And I, okay, मेरा basic traits क्या है? Think about yourself, ask within yourself, then take a decision. Not because मेरा friend ने लिया, not because parents compulsory कर रहे हैं, not because नहीं इसमें मार्केटिंग में इसमें इसके लिए जाना पड़ता है. तो क्या डायरेक्ट सेल्स के लिए जाना पड़ता है? सेल्स मुझे करना अच्छा लगता है, उसलिए मुझे मार्केटिंग नहीं चाहिए. फाइनेंस में बहुत हार्ड सब्जेक्ट्स है तो मुझे मैं पास नहीं हो जाऊंगा, so I will go to HR. Don't do like this. This is a very wrong way of making decision about your HR specialization. This is, I'm talking exclusively to the first year students. So if you are having a confusion, ask yourself. Okay, first step is ask yourself, what is your strong traits, qualities? Okay, आप people oriented हो या task oriented हो? Ask yourself. Then understand your strength. Then ask yourself how you are seeing yourself after 5 years. तो कहाँ पे देखना चाहते हो आपको? कौन सा कंपनी में देखना चाहते हो? किस लेवल पे देखना चाहते हो? और जो भी आप कर रहे हैं, ask yourself, close your eyes and ask. Immediately ask now. Okay, whatever I'm doing, how will I going to do it? I am seeing myself sitting in a corner and playing with data, or I'm seeing myself, coordinating the things, connecting with the people. What I'm doing? Ask yourself. Okay, believe me, market में see, it is said market में entry level में HR job का comparative to marketing, because they get incentives, the payment will be less. But if you are really passionate about HR, you can, within a period of 3 years, you can surpass marketing students. Entry level कम भी मिलेगा तो भी you can surpass, because the shape, the role of HR in today's era is completely changing. There is a paradigm shift. Previously, it was restricted only to an administrative kind of role. So that's what I have written. See, in HR, previously it was like this: administrative tha, supporting function tha, payroll, attendance, complaints tha, managing salary and the paperwork and the documentation work. They were not getting an opportunity to be a part and parcel of decision makers. But now the things have completely changed with the advent of, in this era of robotics and AI. What is happening? HR is now considered as the center of the organization. They are considered as the business partner, HR business partner. See, previously it was what they were into only about execution, but they are now into strategic decisions. So strategic human resource management is just coming up like anything, because students, what is happening? The AI is doing lot of work. There are so many uh, software that is available in the market, which is doing all the man-made work, which was previously done by, for example, salary management hai, leave management hai, or identifying the skill gaps hai, or we can say, in and out, or in the organization, or what you're doing, or any kind of special allowance or any kind of appreciation. So these all basic kind of work that is being now managed. There are thousands of software available in the market, which is as per the budget, every company is affording that. So what is happening? So everything is, technically done. So now generally there is an assumption. Sir, फिर HR का role क्या है? HR का role फिर बहुत important है. Nowadays, with the advent of what I can say, robotics and AI, what is happening? Everything is becoming too much mechanical, and
the most. Actually, I was talking to the director of, she is my very good friend. I was discussing with her. She said the highest challenge which they face now today in this era is retaining the talent, number one. Number two, even the talent is retained, maintaining the culture, maintaining that vibe, positive vibe in the organization. Actually, what is happening? Because of mobile, because of AI, people are going into silos. She was saying कि मैम इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है. So, यहाँ पे एचआर का बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल है. प्रीवियसली एम्प्लॉय एंगेजमेंट लोगों को पता भी नहीं था, बट नाउ एम्प्लॉय एंगेजमेंट इज बिकमिंग अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ डेली वर्क. कुछ ना कुछ एक्टिविटी कंपलसरी एचआर को देना ही पड़ता है. Previously, it was there were no branding at all. कि एम्प्लॉय ब्रांडिंग करना ऐसा कुछ लगा ही नहीं था, बट अभी एम्प्लॉयर्स को खुद को ब्रांडिंग करना पड़ता है एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इवन इफ यू गेट अ ऑफर लेटर फ्रॉम ग्रैंड थॉर्टन फॉर एग्जांपल और डेलॉइट, what you immediately go and do? You immediately go and see the LinkedIn and see is there any review about the company. Do you all agree? So now she was saying to me that director HR, Miss Nora, she said ki, Manisha, I'm having a lot of challenge. So now you, as an HR, if you have these skills and if you have out of box approach, you can become the center of an organization and create miracles in the organization. And every organization need this kind of ability, this kind of skill in this era. Okay, so you are required to provide the decision strategically. So there you require, now the HR is like data driven recruitment. Okay, for example, previously what they used to do, they used to receive the resumes and it was manually done. But now it is not like that. It is nowadays recruiter don't even see your resume. They directly go on. What they do? They go and see your Facebook. They see your LinkedIn pages. They see your what you can say. See your social media presence. How is your visibility? And on that basis, they decide there are softwares available. On that basis, they do the mapping, and as per the job description, whether you are in, whether your resumes are screened in or screened out. Is it making sense? Or is it clear to all of you, or is it confused? समझ में आ रहा है सभी को मैं क्या बोल रही हूँ? यस, ओके. सो यहाँ पे प्रीवियसली जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से कंप्लीटली शिफ्ट हो गया. आप सेंटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, डिसीजन मेकिंग के लिए आप ये कर रहे हो, राइट? एंड ये प्रीवियसली कैसा था? The role of technology, there was an IT department, but now it is not like that. Everybody is expected to be a part and parcel of the technology because we are in the era of AI. Otherwise, we cannot survive in this era. So, हम क्या करेंगे? So you should become tech savvy, right? And you should be flexible enough. You should be open to understand, learn new type of software. तो software are user friendly. आपका कॉलेज में भी रहेगा ERP. Same वैसे corporates में भी काफी ERPs, different kind of softwares will be there. Talent acquisition के लिए, talent retain के लिए, retainment के लिए, and talent development के लिए, or I can say L&D के लिए, or even onboarding के लिए. So there are different softwares available, or all together a module is also taken. So you should be user friendly. You should have that capacity कि okay, आपके पास है ना ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है. कंटिन्यूअस लर्निंग एंड ओपन टू लर्न न्यू थिंग्स. हाँ, मैं तो MBA हूँ, मुझे तो सब आता है. नहीं, यू आर नाउ मैं रिक्वायर्ड. सो दिस इज द शिफ्ट. प्रीवियसली अलग था, अभी कैसा है कि बिकॉज यू आर नॉट अ रोबो. when you are going to enter into the corporate, the movement previously कैसा था, you were having your competitor a human being, but your competitor now will be HR softwares. So how you are different? If you are going to do the same role of a software, you are no more required in the organization. Believe me. Okay. मैंने ये सुना है कि in HCL, in Accenture and some of the leading MNCs, what they are doing is they are having robots, which is
checking the emotions of the employees when they come in. They say कि okay, when they are coming in RFID करके वो अंदर जाते हैं ना, so that time it map, and immediately along with the attendance in front of that person it gives a happy face, emotional face or different kind of emojis वो देता है. So that is also there. Are you getting it? So everything is now dominated by AI. But if you wanted to be different, you should be actually possessing your strong human intelligence. And you should be different and creative and do it. Then you will be always accepted by all the organization. That there will be a red carpet for you in every sectors, in every type of organization. Is it making sense? So there is a shift. Previously जैसा था administrative role नहीं था, क्योंकि administrative role now all the administrative role are taken care by the ERPs and software. You are supposed to do the real human being role. मतलब क्या? Connect करना, collaborate करना, coordinate करना, and creatively organizing something new, that is satisfying things, or resolving the interpersonal conflict, creating a positive vibe in the organization, connecting the dots between departments, supporting people to understand the career map, providing one skill map. एक सॉफ्टवेयर ने कर दिया तो वो स्किल मैप को मिटिगेट, गैप को कैसे मिटिगेट करना है उसके लिए सपोर्ट करना. दीज काइंड ऑफ रोल आर very much expected. Okay, so this will be in the not immediately after you join. So after a certain period, when you become an HR, so this is all expected in the coming years. Is that clear? Okay. So if you see now you all are those second year students and even first year students, you all are in the entry level 0 to 2 years. Mein, you will be getting a position of HR executive recruiter. Here, on behalf of your director and your entire college team, I will suggest whatever job you get at the entry level, immediately after your completion of your MBA, please join. Why? After your examination, if there is a gap, for example, आपका एग्जाम अभी खत्म हो जाएगा मई में, राइट? सेकेंड ईयर के लिए बोल रही हूँ, सेकेंड ईयर का एग्जाम खत्म हो जाएगा, देन स्टिल इफ यू डिले, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे एमएनसी में चाहिए, मुझे एफएमसीजी में जाना है, मुझे बीएफएसएम में जाना है, बेटा जाओ, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, बट आर यू रियली कैपेबल? अपने आप को पूछो. अगर नहीं है तो then immediately, whichever, even if it is a startup, even if it is a small consultancy, even if it is a telecaller job, just join. क्योंकि the more the gap, the higher the possibility of rejection. Please understand. ज्यादा से ज्यादा आप without job नहीं रहना. Is that clear? Is it making sense to all of you? Second year students. समझ में आ रहा है सभी को मैं क्या बोल रही हूँ? Okay. So now, so immediately 0 to 2 years आपका HR executive recruiter का position रहेगा. Then mid level का क्या रहेगा? HR manager, HR business partner. HR business partner is something which is coming. HR manager is slowly, though it is there, but the role of the HR manager is also. The moment I'm saying business partner, मतलब क्या? He is reporting to the CEO and he is reporting. He is talking in terms of business. मतलब कितना? अभी फॉर एग्जांपल मैंने 10 लोगों को अपॉइंट किया, उनके इसके वजह से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उनके ऊपर मैंने ट्रेनिंग के लिए इतना खर्चा किया. सो व्हाट इज द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट? हाउ मच वैल्यू? प्रीवियसली वी वर टॉकिंग ओनली कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर को कितना वैल्यू दे रहा है, दैट इज ओल्ड इरा. अभी क्या है? एवरी एम्प्लॉई हु इज अपॉइंटेड, वेदर एवरी एम्प्लॉई इज गिविंग वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज सी, एंड दैट इज द रोल ऑफ बिजनेस पार्टनर. तो बिजनेस वैल्यू दे रहे क्या? एम्प्लॉय वैल्यू दे रहा है क्या? जो जितना हमने एम्प्लॉय के ऊपर इन्वेस्ट किया है, उसका सैलरी, उसका अलाउंस, उसका पीएफ, ग्रेजुएटी जो भी है, और उसका इंसेंटिव जितना भी है, वो जितना इन्वेस्ट किया है उतना वो बंदा आरओआई दे रहा है क्या? मैच हो रहा है क्या? देयर इज अ गैप. So that is always seen. That is the role of a business partner. So it's all business, my dear. It's all business. पैसा नहीं होगा तो business चल बंद हो जाएगा. So now it is corporate में कैसा? तुम philosophy मत ये करो. So you speak about business. So every decision, देखो आप लोग देख रहे होंगे कि कॉग्निजेंट ने 4,000 लोगों को निकाल दिया, अक्सेंचर ने निकाल दिया, टीसीएस में ये प्रॉब्लम हुआ, इन्फोसिस का नारायण मूर्ति इज गिविंग अ स्मॉल स्टेटमेंट कि 8 hours नहीं 12 hours चाहिए तो पूरा हंगामा हो जाता है. Why this is all happening?
बिकॉज nowadays देखो कि वो लोग देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कॉग्निजेंट बोल रहा है कि मैं 3,000 को मैं निकाल रहा हूँ, वाई? बिकॉज दे आर सीइंग दिस 3,000 पीपल आर नॉट एडिंग वैल्यू, तो इसलिए दे आर टेकिंग दैट डिसीजन ड्यूरिंग द मैन पावर प्लानिंग। तो जैसे पहले कैसा था, चलो 4 लोग इस डिपार्टमेंट में चाहिए, इस डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट को 4 लोग चाहिए, दे दिया। 10 लोग मार्केटिंग डिपार्टमेंट में चाहिए, वो दे दिया। इट इज नॉट लाइक दैट नाउ, it is put it in central and understood is this department hiring is going to help in business. If it is going to help, even if it is a finance department, even if it is a purchase department, even if it is a OSCM, समझ में आ रहा है कि every department has to provide value. Only if it is giving value, then it is considered, otherwise it is not at all accepted. Is that clear, my dear students? It is clear. So HR manager and business partner. Then senior level. So सीनियर लेवल एचआर डायरेक्टर और सीएचआर, वो चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर, तो ये रोल रहेगा बट आफ्टर 8+ years। देखो मेरा जितना भी 2008 से आई एम देयर विद आईआईसीएमआर, I have seen my HR students entry level, it was very mediocre level job, but now they are all the in the very top level, they are a talent acquisition lead, or they are an L&D lead, or they are doing the strategic part of HR, they are doing the industrial relationship role. So these are some of the what I have seen is स्टार्टिंग में मार्केटिंग का बहुत क्वांटम जंप होता है, लेकिन वो एक लेवल के बाद रुक जाता है, बट एचआर का कंसिस्टेंटली स्लोली प्रोग्रेस होता है। And after 5 years, they go into the center of the organization. They become the center of the organization, and they enjoy the work. इसका मतलब ये नहीं है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ये मत करो, हाँ फिर एचआर ही है एचआर लेंगे, नहीं। फॉर दैट यू हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एंजॉइंग ऑल दिस थिंग, यू हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ। इज इट मेकिंग सेंस? ओके, सो नाउ तो ये ऑब्वियसली दिस आई हैव टेकन फ्रॉम चैट जीपीटी ओनली, कि मेरा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कि ये आप भी आप ले सकते हो। मैंने क्या किया, जो भी स्टूडेंट जैसा रोहन सर ने बताया कि रूरल विलेज में है, तो यू विल प्रिफर टू लिव रिसाइड इन पुणे, या इधर इन पुणे और इन मुंबई। तो पुणे एंड मुंबई में इंडस्ट्री वाइज एचआर डिमांड क्या है, सो दैट आई हैव गिवन। सो यू कैन सी आईटी एनेबल सर्विसेज में कितना है, राइट, इन पुणे एंड मुंबई में। And manufacturing, blue is Mumbai and red is Pune. And manufacturing में कैसा है? Okay, banking, finance and service, insurance, banking, financial services और insurance में क्या है, FMCG में क्या है, startup में कैसा है। Okay, this is the distribution of demands position in HR in both Pune and Mumbai. Okay, then what are the top skills? Okay, so for all of you who are sitting here, this skill which I will highlight, this skill, that is HR analytics. You must everybody who is sitting here as an MBA first year student, MBA second year student, एक्सेल नहीं आ रहा है तो सीख लो। यू मस्ट बी क्या बोलते हैं, यू मस्ट बी प्रो इन एक्सेल, दैट इज बेस। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कुछ एडिशनल कोर्स लाइक बिजनेस एनालिटिक्स है, या सर्टिफिकेशन इन एचआर कोर प्रोसेसेस है, मतलब देर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन दैट आर प्रोवाइडिंग, इफ यू वांटेड टू डू, यू हैव टू डू इट साइमल्टेनियसली, so that when you go for an interview you will have the confidence. That is one. Then HRIS tool means at least you should know which are the tools available in the market. देखो जैसा हम ERP यूज करते हैं वैसा ही है, यूजर फ्रेंडली रहेगा। Okay, so you should have that basic knowledge of how to use these software and tools. Yeah, basic knowledge about labor law is compulsory uh, when you are in HR. मॅडम बहुतेक तुमचं अनम्यूट झालंय.
Sir, am I audible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes. So now where I was, okay, these are some of the skills. सबसे important, HR analytics is extremely important, which you should be very, very, very clear about it, right? Then labor laws का तो चाहिए. Recruitment, that's a basic level role. So now it is not called as recruitment, it is talent acquisition, talent retention, and talent development. So you should know everything about it, and you should know the difference between recruitment and selection, where recruitment ends and where selection begins, right? And of course, you should communication. मतलब जैसा मैंने बताया कि L&D का कौन सा भी पोजीशन में आप जा रहे हैं, तो coordination, communication, connection, integration within and among the departments. So all these are required. Is that clear? Okay. So now these are some of the industry-wise opportunities that is available. Okay. Industry-wise क्या opportunities है? Like you can see IT and IT-enabled service में that is talent acquisition बोल सकती हो, that is recruitment, HR analytics, okay, the HR and business policies, okay, those things are there. Our HR business partners, business policies are there. Manufacturing and automobile में industrial relations है, that is also very important है. अगर if that is more appropriate for a male student, अगर आपका ना labor law थोड़ा strong है, and if you love negotiating, mediating in manufacturing company, definitely you can become an industrial relation officer, राइट. तो वो गवर्नमेंट का भी कुछ एग्जाम्स रहता है, तो उसमें भी आप इंडस्ट्री आईआर बन सकते हो इन पब्लिक सेक्टर कंपनीज, एंड इवन इन प्राइवेट यू कैन डू. बट इसके लिए इफ यू हैव अ LLB लॉ डिग्री, इट इज more appreciated. And even if you are not having labor law, when you are doing a career mapping, if you find I wanted to go to industrial relation, you can do a diploma in labor laws. Okay, it's a 1 year course. It is available online, anywhere in leading all universities, autonomous universities. You can enroll yourself for that. So that with the diploma and with your understanding in the MBA HR, definitely you can enter as a IR. ओके, कॉम्प्लायंस मतलब वो लेबर लॉ का बहुत सारे कॉम्प्लायंस है ना, तो वो सारे कॉम्प्लायंस करने के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग में रिक्वायरमेंट है. एंड वर्क फोर्स प्लानिंग ऑफ कोर्स, कि मैन पावर प्लानिंग से लेकर ऑन बोर्डिंग तक का जो भी है उसके लिए चाहिए. देन BFSI में कॉर्पोरेट HR है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, सैलरी मैनेजमेंट, ऑल इन BFSI. Generally, they work. See, nowadays, BFSI, how it is, they are working with a lot of clients. Many of the companies, take Exteria, HCL, in many of the companies, they are working with clients. It's a client-based one. तो आपको within the company and outside the company also, they will be you will be having employees. So you should have the capacity to manage both, and accordingly the roles are developed. Okay, अभी L&T तो ऐसा है कि ऑन रोल भी देता है कि L&T वो, अदरवाइज बिफोर दैट वो क्या करता है, थर्ड पार्टी वेंडर के पास आपका सिलेक्शन हो जाता है, देन इफ यू आर रियली गुड देन दे विल ऑब्जर्व यू विद इन L&T. L&T वैसा करता है, गोदरेज करता है, एंड देयर आर सो मेनी कंपनीज हु आर डूइंग दैट. थर्ड पे पार्टी पेरोल में लेंगे और उसके बाद आपको 2 साल HR का जनरली वो ट्रेंड है अभी, 2 साल 3 साल होने के बाद इफ दे फाइंड यू वेरी गुड, यू आर वेरी गुड, देन after or immediately after, even after the probation, they consider you and observe there in the main role, main payroll. FMCG and retail. So यहाँ पे यहाँ पे main मतलब L&D talent management है. Startup में अगर, see, I will suggest as an MBA freshers, if you are getting an opening even for a small salary, if it is a startup, please accept it. Startup or small consultancy. Reason क्या, कंसल्टेंसी में चाहेंगे तो उनका जो क्लाइंट्स है उनके साथ आपको डायरेक्टली लाइव प्रोजेक्ट्स में काम करने के लिए मिलेगा, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड एंड टू एंड प्रोसेस ऑफ HR. उसके बाद अगर 1 साल के बाद आप वापस मार्केट में जाएंगे तो यू कैन स्पीक अबाउट HR. You will become, your blood will become HR, and you can talk as an HR very confidently. Okay, that's why I'm suggesting, if you go in an MNC,
आपको एक ही रोल देंगे एंट्री लेवल पे ट्रेनी करके, मैनेजमेंट ट्रेनी करके, और एक ही रोल मोनोटोनस करना पड़ेगा, सेम रोल. So you will not have the exposure. We are that too in an ERP. So you will not an exposure, you not have an exposure to learn beyond that. But rather, on the contrary, if you go to a small startup, I'm not suggesting that you must go to that, but it is one of my request. कि suggestion है, अगर आप startup में जाएंगे, strategy making से लेके business को understand करने तक, you will understand everything. Is that clear? And yes, as I said, the consultancy firm hai, even if it is small, top consultancy firm hai, if you are getting it, it is great. And if not, don't worry, at least enter into some consultancy with the whatever job they provide. सबसे important यहाँ पे क्या पता है क्या? एग्जाम होने इमीडिएट होने के बाद इमीडिएटली ज्वाइनिंग होना, अदरवाइज स्ट्रेस आता है, लोन है, फिर हमारा मार्केटिंग या फाइनेंस स्टूडेंट्स का जॉब मिल गया, मुझे नहीं मिला, उसका तनाव आता है. देन इफ यू आर इन टेंशन अगेन प्रॉब्लम होगा. सो जस्ट जॉइन इन एनी कंपनी. देन एक साल डिसाइड करो, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट दिस. गिव द बेस्ट, डू द बेस्ट, देन यू विल गेट द बेस्ट. ओके, सो दिस इज देयर. एंड एवरेज एचआर सैलरी 18 लाख इधर बहुत कम दिया है इसने. सो I know that in all the leading companies, IIM में some of my friends are there, even in Birla, Delhi में some of my friends are there. And when I was discussing with them, they were surprised to see the trend. The trend is now changing. Previously, it was marketing used to get the top package and the finance. But last time what happened, it was vice versa. Marketing were the least, मतलब 6 lakhs 8 lakh तक तो सब सारे average jobs marketing को मिला. And same thing with the finance specialization. But for HR, the highest package was 23 and 24 for an entry level person also. Are you getting it? So, एक साइड पे है कि जनरली बताया जाता है कि HR को कम मिलता है. But if you really have the potential, if you are really have possess all these capabilities, you can also have 24 lakh per annum. But that is your ambition, aspiration. You have to take appropriate action. जो पहले हमने देखा ना, अदरवाइज गैप मिलेगा तो नहीं होगा. Nobody will appoint you. So मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को क्या बताती हूँ कि देखो, आपको 10 लाख चाहिए, 12 लाख चाहिए, it's perfectly okay. But ask yourself, if you are the owner of, if you are the CEO and MD of your own company, will you appoint your own self? If your answer is yes, then go ahead. Accordingly, you can demand with the company. But answer is no, think. Prepare yourself. मिलेगा, सब मिलेगा, आपको जो चाहिए वो सब मिलेगा. Prepare करो, plan करो, focus करो. Then accordingly go to the next level. Is it clear? So these are some of the skills required. रोहित सर, मंजरी मैम, टाइम कितना है? Is it okay if I extend for another 10 to 15 minutes? Yes, ma'am. Okay, Absolutely. okay, ma'am. Okay. Okay, na? Okay. Thank you so much, sir. So these are some of the skills required. Technical skills क्या क्या है जो हम थियरी में आज तक पढ़ा है, स्पेशलाइजेशन लेने के बाद जो भी हमने पढ़ा है, और स्पेशलाइजेशन पहले फर्स्ट ईयर में वो भी, सेकेंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में वो भी, सेकेंड सेमेस्टर में HR है. So out on that basis you will have some idea about it. And labor laws के बारे में सेकेंड ईयर में you will learn when you take an HR specialization. हाँ, yes. जैसा मैंने प्रीवियसली बताया कि एक्सेल, पावर बीआई का बेसिक्स आपका आना. आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड नो कोडिंग वगैरह वगैरह वगैरह, बट इफ यू मस्ट नो द बेसिक्स. It's not hard and fast. I am not a tech savvy, but as per the requirement, I also made myself. So I'm the learning AI now. I'm learning. I'm in the learning mode, but we have no other option. So you should be also, have the basics knowledge of Power BI. Then some HR tools, HRMS के बारे में देखो. SAP बोल रहे हैं कि जरूरी है, but what I will say कि if because the cost fees of SAP is very high. If it is easily affordable, go for it. If it is not, as a SAP में भी बहुत अलग अलग modules है. So if it is not affordable, it's okay. Go for the entry level. फिर आपका एक बार सैलरी आ जाएगा. इधर आप अगर कंपनी ही प्रोवाइड करता है SAP का ट्रेनिंग, उनका अगर सॉफ्टवेयर SAP का रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपको ट्रेनिंग मिल ही जाएगा.
Otherwise, then after a period of 6 months, आपको कुछ salary आ गया है, then if you feel, then you can go for SAT. Otherwise, basic सबसे important is Excel. Excel में भी advance बहुत है. If you know Excel, you can easily understand Power BI for sure. Okay, so these are some of the skill. एंड सॉफ्ट स्किल के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है. हाँ, इसमें और एक मिथ होता है कि जनरली मुझे बोलते हैं बच्चे, मैं तो रूरल एरिया में हूँ, सो मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, देन उसलिए मैं एचआर नहीं लिया. वैसे मत करो. एचआर के लिए इंग्लिश ये आना चाहिए, दैट इज वेरी रॉन्ग. माई अंडरस्टैंडिंग एंड माई विथ आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस में बता रही हूँ, with whatever time whenever I have discussed with the HR, what I understood is they need proper orator or a communicator. Not necessary that it must be in English. English basic आपने manage किया, very good. Otherwise it's fine for them. Is it clear to you all? तो communication मतलब English communication है. English communication चाहिए, but यू नो कि जितना जरूरी है उतना होगा. ऐसा नहीं है कि आपको शेक्सपियर इंग्लिश चाहिए या ब्रिटिश एक्सेंट चाहिए. नॉट नेसेसरी. इंग्लिश इज नीड बट इट इज नॉट मस्ट. ओके, बट कम्युनिकेशन आपका मतलब के साथ जैसा कि आप जो सोच रहे हैं वही एक्सप्रेस करना, क्लियरली एक्सप्रेस करने के लिए आना चाहिए. नेगोशिएशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसा यू आर नाउ डेज एचआर इज कंसिडर्ड एज अ कैटलिस्ट, center of an organization. So are you able to connect with the department, understand the department? अरे ये परचेस वाला तो ऐसा ही बोल रहा है, फाइनेंस वाला तो बजट ही नहीं दे रहा है, मार्केटिंग तो सेल्स ही नहीं दे रहा है. ब्लेम करना इट इज वेरी इजी. और मार्केटिंग का बॉस बहुत गलत है, उसकी वजह से टारगेट इतना दे रहा है तो एक ही लोग नहीं रहते हैं, उसकी वजह से मुझे बहुत काम करना पड़ेगा. Nobody is going to value you. You have to be on the toes, always positive, and you must have that empathy, going into the shoes of others. Empathy is one of the most important skill. कि गो एम्पैथी का मतलब क्या है? जब अभी मनीषा मैम बात करें तो मनीषा मैम के शूज के अंदर जाके उसको समझना. सिमिलरली अगर आपके साथ इफ यू आर एन एचआर, एंट्री लेवल में जरूरत नहीं है, बट मिड लेवल में जाएंगे तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल प्रॉब्लम नाउअडेज. देखो, टॉप लेवल क्या करता है? विजन डिसाइड करता है, गोल डिसाइड करता है, वो एक्शन ये बनाता है, राइट? वो सिर्फ डायरेक्शंस देता है. और लो लेवल क्या करता है? जो ऊपर बताते हैं वो मिड लेवल को बता देते हैं, मिड लेवल ये कर देता है. बट एक्चुअल काम किसको करना पड़ता है? मिड लेवल को. आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2 or 3 years यू विल गो टू द मिड लेवल. यहाँ पे मिड लेवल में क्या होता है? लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, specifically mid-level managers, because these are the people who are the actual executors from the shop floor people, from the lower level people. Are you getting it? यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा तो यहाँ पे लो लेवल वाले लोग करेंगे नहीं काम, वो लोग भी डिससेटिस्फेक्शन में चले जाएंगे और मिड लेवल में भी डिससेटिस्फेक्शन होगा. तो ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन है वो अचीव नहीं हो पाएगा. ऑर्गेनाइजेशन का ये टारगेट है कि 10% रेवेन्यू इंक्रीज करना है, वो नहीं हो पाएगा. So now the role of HR here in this mid level is understanding the department. हर डिपार्टमेंट का एक प्रॉब्लम रहेगा, अकॉर्डिंगली उनको अंडरस्टैंड करना, अकॉर्डिंगली उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना. then you will be considered as a very good HR. Then people will come to you, we will talk to you, and wanted to express, share their feelings, so that you can become a solution provider instead of problem creator. Okay, you will be the solution provider for every problem. वैसा होगा, that is most important. कि कुछ स्टूडेंट्स का ना, मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरे कॉलेज में तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो भी whenever they come to me कि मैम ये कल्चरल क्लब में ना मैम एमसीए ने हमारे साथ झगड़ा किया, इसने झगड़ा किया, फर्स्ट ईयर यही नहीं कर रहा है. मैं बोल रही सो दीस ऑल आर द प्रॉब्लम्स, यू आर नाउ एमबीए, ओके, गिव मी द सॉल्यूशंस. Even after you go into the corporate world, they will ask this. If you are, anybody can say about the problem. Saying problem is very easy, but everybody will say कि okay, ये problem है, solution क्या है बता रहे बेटा बता. So if you go up with creative out of the box solution simple होता है. If you go with that, you will be promoted. Is that clear? Okay. Okay, these are the core career opportunities available. देखो आपने already HRM में देखा होगा, from entry to exit, manpower planning to onboarding,
राइट? इंडक्शन तक आपने पढ़ा होगा, एचआर में पढ़ा है सभी ने. सो सेम थिंग अकॉर्डिंगली इट इज देयर. तो एचआर का एंट्री लेवल का क्या क्या ऑप्शंस है? एचआर एग्जीक्यूटिव, एचआर जनरलिस्ट का ऑप्शन है. टैलेंट एक्विजिशन, आईटी एंड आईटी एनेबल सर्विसेज में एचआर रिक्रूटर को टैलेंट एक्विजिशन बोलते हैं. देन रिक्रूटर होता है. देन एचआर बिजनेस पार्टनर इज देयर. Then learning and development it is there, and compensation and benefit. So it is all working with software. Then employee relations. So these are some of the core HR career options. So ये clear हुआ सभी को इसमें किसी? Okay, please understand which are the things. And if you have any doubt in any of the slide which I'm speaking, you can write the question, note down the question, and I will answer the question at the end of the session. Okay. This is emerging HR roles. What are they? HR analytics specialist है. जैसे मैंने बताया एम्प्लॉयर ब्रांडिंग मैनेजर. देखो पहले ऐसा नहीं था कि पहले सब लोगों को क्या लगता था कि even now if you are going to company you don't think that you need them. The reality is they also need equally like you, because nowadays getting a good talent is becoming a very hard task, toughest challenge. समझ में आ रहा है क्या? तो इसीलिए क्या करना है, अभी क्या कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन, दे आर हैविंग देयर ओन ब्रांड मैनेजर. मतलब क्या, एक्सक्लूसिवली एक पोस्ट अपॉइंटेड किया है, तो वो पोस्ट में वो लोग लिंक्डइन में, सोशल मीडिया में, एवरीवेयर, इन यूट्यूब, इन ऑल द चैनल्स, even internally as well as externally, they will put all positive things about their culture, organization, behavior, and the career roles, because they wanted to brand. देखो आपने रिसेंटली काफी सारे इंसिडेंट सुना है कि लाइक सडनली व्हेन वर्किंग विथ डेलॉयट, आई थिंक फेस्ड मैसिव हार्ट अटैक. इन्फोसिस का एक केस हुआ, डेलॉयट का केस हुआ. व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन. तो अगर एक बार अगर ऐसा हो गया, देन दैट कंपनी में वापस लोग जाना नहीं चाहते. स्पेसिफिकली योर जनरेशन, दे डोंट वांटेड टू गो, बिकॉज दे फील कि नहीं बाबा मुझे पैसा भी चाहिए लेकिन वर्क कल्चर अच्छा नहीं होगा तो मैं नहीं काम करूंगा. सो व्हाट दीज पीपल आर डूइंग, एम्प्लॉयर नाउ दे आर ब्रांडिंग देयर ओन कंपनी. तो उसके लिए स्पेशली लोगों को लगाता है, रखते हैं, और उनका फोटोग्राफ कि जैसा हम अपना इंस्टीट्यूट का, MBA MCA इंस्टीट्यूट का वेबसाइट बनाते हैं, प्रॉपर ब्रांडिंग करते हैं फॉर टेकिंग एडमिशन. सिमिलरली दे ऑल्सो डू फॉर अट्रैक्टिंग द टैलेंट, एंड दिस इज अ फैंटास्टिक रोल. Agar if somebody is interested, please look into it, and you can develop yourself for that. Okay, employer branding role है. हाँ, this is diversity and inclusion manager. So previously कैसा था, मेल फीमेल था, अभी मेल फीमेल और भी एक आ गया. So there are so many things. So there is a diversity. तो उसमें inclusivity कैसा लाना है? Because there are so many laws. ESG compliance आ गया है. Company Act is expecting so many things, CSR and all the other requirement. CSR is also something which is booming up. CSR means corporate social responsibility. वहां पे भी काफी सारे options है. Those who are having social, social touch, who wanted to be a part and part of the social, so they can do these kind of roles. That is also very nice role, CSR में. And diversity and inclusion manager is a very important role. Then digital transformation, yes, जैसा मैंने बताया कि पहले IT डिपार्टमेंट अलग था, ऐसा नहीं है. अभी हर एक डिपार्टमेंट को ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजिकल कंसल्टेंट का रोल every department is having. So like that HR is also having. And people experience manager is like an industrial relationship manager. That's as I said कि mid level managers का बहुत सारे problems रहता है. बॉस के साथ प्रॉब्लम, कलीग्स के साथ प्रॉब्लम. बिकॉज अगर मिड लेवल रुक जाएगा, आपका काम ऊपर भी नहीं जाएगा, नीचे भी नहीं जाएगा. सो योर वर्क विल बी स्टॉप. सो यहाँ पे यू शुड डू द रोल ऑफ अ कैटलिस्ट. यू शुड डू द रोल ऑफ अ पीपल एक्सपीरियंस मैनेजर. मतलब अंडरस्टैंडिंग, having empathy, understanding the people and understanding the role, accordingly delivering and doing it. Okay, so these are specialized and emerging roles. Okay, HR associate. So these are the thing कि generally आपका offer letter में this kind of post you will get. HR executive, HR associate, HR executive management trainee, HR associate management trainee. So in different role. ये कुछ नहीं, मैं कुछ rocket science नहीं बता रहा. Already आपने human resource management you have learned. So in human resource management start to end जो भी 5 यूनिट्स में बताया गया है वही है उधर डिपार्टमेंट्स में. राइट आपने थियोरेटिकली देखा है, एग्जैक्टली वो जो भी आपने थियोरी सीखा है दैट इज देयर इन प्रैक्टिकल वे.
देयर इज नो थिंग नथिंग कि अरे हाई फाई कुछ नहीं है, रॉकेट साइंस कुछ नहीं है. उल्टा, इफ यू आर एन एमबीए यू कैन क्रिएट वंडर्स, बिकॉज वहां पे जो लोग रहेंगे कि दे विल बी एन इंजीनियर्स, राइट? इन अ डिपार्टमेंट दे विल बी इंजीनियर्स, बट इफ यू आर एन एमबीए एंड इफ यू नो कि स्किल गैप कैसा आइडेंटिफाई करना है, स्किल मैट्रिक्स कैसा बनाना है, इफ यू नो कि अरे स्ट्रैटेजिक एचआर का किस किस प्रकार से बनाता है, मैन पावर प्लानिंग के लिए कौन सा टूल यूज करना है, so you are going to give very good suggestion and you can make your role more powerful and more effective. Okay, as an MBA student. So whatever I'm talking career opportunities, की career opportunity is nothing but आपके HRM starting to end, मतलब entry to exit of an employee, जितना भी role है उसको बुला अंदर लाना, उसको स्क्रीन आउट करके और उसको मेंटेन, उसको संभालना और वो बाहर जाने के वक्त उसको सपोर्ट करना, राइट? तो दैट इज द रोल ऑफ एट एचआर. सो दिस इज ऑल रिटर्न इन द सेम लेवल. एचआर बिजनेस पार्टनर है, ऑपरेशन मैनेजर है, टैलेंट एक्विजिशन रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट है, एम्प्लॉय रिलेशन है, एचआर एनालिटिक्स है, मैनेजर पेरोल मैनेजर है, एचआर मैनेजर रहता है, then HR strategy and workforce level management. So these are some of the executive level role. Okay, apart from these are the traditional level executive level role. Apart from that, there are non-traditional and high growth options. So वो कौन सा है? For example, I am an HR person. I completed my law and I did my MBA in HR. Even when I was working with, even I'm working with ISMR, I'm simultaneously doing the role of a corporate trainer. And since 2017 itself, I have started my coaching. I have started my career counseling. Are you understanding what I'm doing? So I am doing the role of an HR. So these are something which is will give you high growth options. For example, मैं coaching के लिए एक coaching के लिए I 470 की. Okay, for 12 session, 12 hours, 3 months session agreement रहता है, but result guaranteed, right? So this is not with the company. It's not a traditional level. It's a non-traditional level, but ये era में apart from the basic traditional role, simultaneously you can develop this also. But immediately मैं suggest नहीं करूंगी कि आप coaching के लिए वगैरह जाओ. But yes, if you really have that passion, if you are very good mediator, if you really understand your others, then definitely you can train. There are so much of certifications. Even for corporate training के लिए डिप्लोमा इन LND, डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ऐसा काफी सारे डिप्लोमास है. देन यू कैन बिकम अ करियर कोच और अ लाइफ कोच और एनी काइंड ऑफ कोच यू वांटेड टू डू. यस, पीपल ऑपरेशन मैनेजर ना, एक होता है कि विद इन द कंपनी, एक होता है कि यू कैन बिकम अ पीपल ऑपरेशन मैनेजर एंड यू कैन डू द फ्रीलांसिंग इन 10 कंपनीज. आर यू गेटिंग इट? बिकॉज ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया लोगों का. सो पीपल मैनेजर करके उधर जाके उधर बैठ के लोगों का, आपका काम क्या है? लोगों को सुनना, लोगों का satisfied करना, satisfaction देना, so that their productivity is enhanced and their individual performance is enhanced, so that they are matching with the requirement of the organization performance. Then yes, you can become your own entrepreneur or you can start your HR consultancy also. कि मैंने काफी सारे मेरे स्टूडेंट्स को देखा है, इवन दे आर फ्रॉम द रूरल एरिया, शादी के बाद जनरली गर्ल्स क्या करते हैं कि वर्क फ्रॉम घर पे ही कॉन्ट्रैक्ट के लिए शुरू किया. सम ऑफ माय स्टूडेंट इवन स्टार्टेड प्रोवाइडिंग मेड्स to different places. So these kind of small startup you can think about. But I will suggest immediately, at least for 2 or 3 years, take an experience, then go to this. But ये two, इसलिए मैंने starting में when I started my presentation, I said that there is a huge difference between a job and a career. Don't prepare yourself for getting one small job. Otherwise, you will end up nowhere. Today itself, first year में हो या second year में हो, prepare your career. Prepare your career map. मैं बताऊंगी कि career map कैसे करना है. Okay? Is that clear? Okay. Now what you're going to do is कि you all were sitting and I am talking, right? So actually I wanted to take this as an activity. What you can do is देखो students, let me be very honest. मैं देखो मैं जो कुछ experience है करके मैंने कुछ बना के नहीं बैठी थी. Yeah, my experience उसमें डाली थी. I included my experience in this presentation, but I have taken support from ChatGPT.
right? Because in this era, if I'm not using ChatGPT, I'm nowhere, right? But ChatGPT यूज करने के लिए भी आपको कुछ ये चाहिए. Simply ChatGPT कुछ भी दे रहा है तो accepting, that's not acceptable. So what I will suggest is, now I request everybody to take your pen and paper and write it down. क्या करो, सबसे पहले आपको क्या करना है, you have to identify your skills, top 5 strength of yours. आपका top 5 strength कौन सा है वो लिखना है आपको. मुझे राइट इट डाउन. अब फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर मिस्टर राहुल और भूषण, राइट इट ऑन मिस्टर भूषण, मेरा टॉप 5 स्किल क्या है. ये मैं होमवर्क दे रही हूँ, आपको ये करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट योर नेम, देन टॉप 5 स्किल्स क्या है वो लिखो. विच इज द सेक्टर वेयर यू वांटेड टू वर्क. Okay, the sector which I wanted to work. Somebody will say BFSI, somebody will say IT and ITES, somebody will say no, I wanted to work in startup, somebody will say NGO, whatever it is, write it down. Clear है? Then career progression अब in this sector. So for example, आप chat GPT में क्या करेंगे, I am a MBA second year student, wanted to work in having these are my traits, and wanted to work in what we can say, wanted to work in FMCG companies, and now ask the ChatGPT to give you your career gap. You will see the wonders. प्रॉपर प्रॉम्प्ट अगर आपने दिया तो वो प्रॉपर आपको करियर मैपिंग देगा. सो वैसा आपका ट्रेड सब लिखने का अकॉर्डिंगली you will ask the chat GPT to give the career mapping. तो इसमें क्या हो जाएगा कि आपका वो पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल अगर आपने लिखा है कि आईटी एंड आईटीएस सेक्टर में चाहिए, अगर आपका ये स्किल है तो वो करियर मैपिंग बताएगा. आपका एंट्री लेवल जॉब ये हो सकता है और मिड लेवल जॉब ये हो सकता है. फिर ये तो ये होने के बाद उसको ही पूछना है वापस, which are the skill set required for achieving this above mentioned career graph. Okay, then it will also provide you the skill set. Then ask, is there any certification, is there any add-on courses I am supposed to do. You will get it. Actually अगर टाइम होता तो मैं अभी आपको करने के लिए बोलती थी, but as we are not having time, that much of time, so I'm giving you this as a homework. I request the director and the Manjari ma'am and whoever is coordinating this session, please get this done from the students, because it's going to give wow effect to the students. I have done with my students. So please do it. It's my kind request to all the coordinators and the students. फैकल्टी मेंबर करे या ना करे, आप लोग तो ये जरूर करना है. ओके, ये आप जब जैसे मैंने बताया है कि विच आर द पॉइंट्स आई सेड, फर्स्ट इज आपका नाम, उसके बाद आपका स्ट्रेंथ क्या है, कौन सा स्ट्रेंथ क्या है, विच सेक्टर में आपको काम करना है, उसका करियर ग्राफ क्या है, उसके लिए स्किल्स क्या है और उसके लिए सर्टिफिकेशंस क्या करना है. दीज आर द 6 पॉइंट्स which you should ask to the chat GPT and prefer your own career graph. Once it is prepared, then if you are in first year, make your road map accordingly. अच्छा, फर्स्ट 3 मंथ में मैं ये करूंगा, सेकंड 3 मंथ में ये करूंगा, अकॉर्डिंगली यू डू इट. एंड इफ इट इज यू आर इन सेकेंड ईयर, डोंट वरी, टाइम गया नहीं है, जो भी जॉब मिल रहा है उसे ले लो, लेकिन आपका करियर ग्राफ के अनुसार, आपके स्ट्रेंथ के अनुसार वो जो भी आपको मिला है, accordingly you can work on it and do the certifications or diploma as per your passion or as per your I will say interest. Okay, so this is this clear to everybody, whatever I'm saying now? सभी को क्लियर हुआ ये? Okay, so okay, many of them are saying yes ma'am. So now it is very clear. So this is one prompt. उसके अलावा आप क्या करने का है कि जैसा ये पीपीटी तो मैं दे दूंगी आपका इसको, इट इज दिस पीपीटी इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड, सो यू विल बी हैविंग दिस पीपीटी विद यू. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट यू आर सपोज टू डू इज कि सभी का एक क्वेश्चन रहेगा कि दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच ऑलवेज एवरी स्टूडेंट कम एंड आस्क मी कि मैम ये कंपनी का आया है, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि क्या करना है. कि फॉर एग्जांपल देयर इज अ कंपनी कॉल्ड टीम लीज. ओके, इट्स एन एचआर कंसल्टेंट और एचआर टीम लीज आपके पास आया है. So now, as a student,
मुझे बताओ कि वन आई रिक्वेस्ट वन ऑफ द स्टूडेंट्स टू प्लीज अनम्यूट. अगर टीम लीज आपका कंपनी आया, सेकेंड ईयर स्टूडेंट था प्रिफरेबली, तो टीम लीज आपका कंपनी में आया करके नोटिस लगाया प्लेसमेंट सेल ने, देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, व्हाट यू डू, हाउ यू प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू, मुझे बताएंगे? एनीबडी? मे आई रिक्वेस्ट somebody to please unmute and speak? Even if it is wrong, it's okay. I'm going to give some tips. Come on, quickly. Hello, students. Ma'am, first we will analyze May the know job the description. name of the student. Sakshi. Sakshi Sakshi. Gaikwad. Yes, please, Sakshi. Yes, speak. Yeah, so first I will analyze the job description, means what is the role and Mm-hmm. what are the skills required for the job, and accordingly I Okay. will prepare for the interview. Okay. Okay. This is what you do. Anybody want to add some more points? Any other student? MBA second year student? Any other? कोई भी नहीं? Ma'am, हाँ, yes. I'm Who's this? Bhushan. Bhushan. Yeah, Bhushan. speak Bhushan. हाँ, yeah. I'll be checking the skills required, experience for the job, and qualification before going to interview. Okay, so this is what you will see. Okay, so very good. Both of you, I should clap that you made an attempt to speak for them, speak on behalf of everybody. ये राइट है, बट अभी आप दोनों ने भी जो बताया है, बस इतना ही करने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा क्या? नहीं होगा. No, ma'am. नहीं होगा. सबसे पहले when you are an MBA, you should understand what they want. How you will understand what they want? You cannot understand, right? Recruiter इतना shrewd रहते हैं, वो आपको unnecessarily challenging question करेंगे और unnecessarily आपको गुस्सा आएगा ऐसा क्वेश्चन करेंगे. Do you all agree to this? Because they are trained like that, right? They will Yes. speak. हाँ, they are trained like that. तो कभी कभी तो इतना गुस्सा आ जाता है, अरे कि खुद को क्या समझता है. और कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में आप अंदर जाते हो, सुबह 10 बजे बुलाएंगे, 5 बजे तक इंटरव्यू नहीं होता. यू गेट इरिटेटेड, यू गेट एंगर, right? These all are understanding the way they select the student, because nowadays for them also it is a target from their boss. और उसके अलावा सिर्फ टारगेट नहीं है, ये अपॉइंटमेंट करने के बाद, ऑनबोर्डिंग करने के बाद उधर प्रोसेस खत्म नहीं होता, सिलेक्शन होने के बाद प्रोसेस खत्म नहीं होता. ऑनबोर्डिंग करने के बाद इज दैट टैलेंट इज बीन रिटेन्ड, सिर्फ रिटेन हो गया वो भी नहीं चलेगा, वो वैल्यू दे रहा है क्या? इज दिस पर्टिकुलर एक्स और वाई इज गिविंग वैल्यू टू द कंपनी, वेदर इट इज कमिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, वैल्यू कुछ मिल रहा है क्या? देन ये बंदा को इंसेंटिव मिलता है जिसने हायर किया. सो ही शुड बी वेरी केयरफुल एंड कॉन्शियस कि आपको पता है कि मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स आर देयर इन अ लीडिंग कंपनी. सो मैं मेरे स्टूडेंट्स के लिए बात करती हूँ, व्हेन इट इज फॉर इंटर्नशिप वो बोलते हैं ठीक है तुम सेलेक्ट करो, तुम भेज दो. बट इफ इट इज फाइनल प्लेसमेंट ना, मैं बोलती हूँ अरे मैं आई रिकमेंड, वो बोलते हैं नहीं मैम सॉरी, नहीं मनीषा, बिकॉज फाइनली दे हैव टू रिपोर्ट टू देयर बॉस. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? कि उनको भी टारगेट है. अगर मनीषा भेजती है तो गलत हो सकता है. दे वांटेड टू सी द कैंडिडेट, दे वांटेड टू चेक द कैंडिडेट, they wanted to see all traits, technological skills, soft skills, I will say human intelligence skills. Nowadays everything they will say, then they will take a decision. मनीषा का ओन सिस्टर भी एलडेंटी में है, गोदरेज में है, तो वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं. Are you understanding this? Okay, so now what I'm saying this is, so for example, if a company is there in your placement sellers announced कि टीम लीज आ रहा है या XYZ कंपनी आ रहा है, सबसे पहले वो कंपनी का क्या करेंगे? वन इज जॉब डिस्क्रिप्शन, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मिनिमम 5 टाइम्स पढ़ना है. एंड इफ यू आर हैविंग अ फ्रेंड, डिस्कस, मैंने ये समझ के लिया, ये इस बराबर है क्या, दोनों को सेम ही समझ में आया है क्या? ओके, समझ के लो. Read, please note it down. Read job description minimum 5 to 10 times. Read it again and again and again and again and again. Because every time you read, you will get one more clarity. Number one. Number two, go and visit the website of Team Lease, whichever company.
उसका वेबसाइट पूरा समझ लो, और उस वेबसाइट में उनका करियर ग्राफ, इस पोजीशन का करियर ग्राफ है क्या देखो। अगर नहीं रहेगा तो चैट जीपीटी से, योर जनरेशन इज वेरी लकी, यू कैन गेट आंसर। चैट जीपीटी से प्रॉपर पूछो उसका करियर ग्राफ क्या है। नंबर 2, नंबर 3, I understand what are the services, who are the, so okay, what is the services this particular team lease is providing. Number 3, number 4, who are the clients if it is a consultancy company, okay, or if it is a organization, which are the products, which are the services they are providing. If it is a service oriented company, service kya de rahe, and if it is a product oriented company, which are the products they are offering and which are the services they are offering. Point number 4. Okay, then identify the competitors. Who are the competitors they are having at present? Who is the most closest competitors to this particular company? और उस कंपनी का ओनर क्या है, कौन है, और वो प्राइवेट लिमिटेड है, लिमिटेड लाइबिलिटी एलएलपी है, पार्टनरशिप फर्म है, और it is an acquired, it is coming under a subsidiary holding, or it's a holding company, whatever it is, it's a US based company, UK based company. Why I am saying this, ये पूरा आपको देखना पड़ेगा. Okay, after you see all this thing, then come to again to the job description. फिर जॉब डिस्क्रिप्शन में फॉर एग्जांपल पोजीशन है टैलेंट एक्विजिशन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव टैलेंट एक्विजिशन, देन टैलेंट एक्विजिशन का रिलेटेड मतलब क्या है, टैलेंट एक्विजिशन मतलब रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, वो उसका टेक्निकली मतलब थियोरेटिकली आपने जो भी सीखा है अकॉर्डिंगली, theoretically whatever you have learned, read it, genuinely read करो, prepare करो, because recruiters are not fools. They will ask any question, you should be understand. They may ask a silly question, give me the difference between recruitment and selection, or they may ask talent acquisition or recruitment फर्क क्या है, why it is said like that, why it is not recruitment, why it is now called as talent acquisition. You should be able to do the answer, give the answer, और वो भी not in a theoretical way, practically अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो I will definitely suggest all of you in your LinkedIn profile follow 1 or 2 senior level directors of HR. नहीं होगा, नहीं मिल रहा है मैम, आज के इसमें नहीं है, हम ऑलरेडी एमबीए सेकेंड ईयर में है, नथिंग टू वरी. आपका जो सुपर सीनियर्स है कि जो alumni आपका कॉलेज का रहेंगे ना, तो alumni में कोई तो ऐसा रहेगा कि जो अच्छा टॉप लेवल में एचआर में है, उसके साथ डिस्कस करो. ओके, अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रोफाइल. फॉर एग्जांपल टैलेंट रिक्वायरमेंट है तो आपने थियोरेटिकली मैन पावर प्लानिंग पढ़ा है, फिर हर डिपार्टमेंट कैसा सबमिट करता है, वो बजट में कैसा इनकॉर्पोरेट होता है, वो पढ़ा है, राइट. तो प्रैक्टिकली वो कैसा होता है अंडरस्टैंड, और अंडरस्टैंड करो. और अगर देन व्हाट यू डू, चैट जीपीटी में ये देखो कि विच आर द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड फॉर दिस टैलेंट एक्विजिशन रोल. Are you getting what I'm saying? Are you all writing it, whatever I'm saying? Students? Yes. So then you find it out कि talent acquisition role रहेगा, और talent acquisition role करने के लिए which are the existing HR tools that is available. ठीक है, and टेक्निकली कौन सा स्किल्स चाहिए, फॉर एग्जांपल एक्सेल लिखा है या पावर बीए लिखा है, वो भी समझ लो. ओके, सो अभी so if you cover all these points, okay, then you go for an interview. Will it make a difference? Will it make a difference? I want somebody to speak. Yes. Yes. Yes, it is going to make a huge difference. मैं कैसा होता है ना, हम इंटरव्यू जैसे आते, एक तो देखो मैं सेकेंड ईयर का सी आई रेस्पेक्ट देम, बट सेकेंड ईयर का माइंडसेट को आई अंडरस्टैंड वेरी नाइसली, बिकॉज उनका भी बहुत एंग्जाइटी रहता है कि मैम अभी 4th सेमेस्टर आ गया है, लेक्चर्स तो नहीं हो रहा है, लेकिन अभी हमें जॉब तो मिलना है,
जॉब मिलेगा कि नहीं, हमारे इंटर्नशिप का पता नहीं है, इंटर्नशिप का हो गया है, कहाँ पे भी कुछ ऑफर नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, कॉलेज ये नहीं कर रहा है, वो नहीं, सो यू विल हैव तो सो मनी वरीज। वो सब छोड़ दो, इसी दिस मोमेंट, डिलीट ऑल ऑफ इट, टेक एक्शन, डू इट नाउ, स्मॉल एक्शन। देखो, प्रॉब्लम बोलने वाला बोलते रहेगा, बोलते रहेगा, बोलते रहेगा, देन यू विल नॉट गेट एनीथिंग। कॉलेज कंपनी ला रहा है, इट्स वेरी गुड। कॉलेज कंपनी नहीं ला रहा है, कनेक्ट, बिकॉज इट्स एन एरा ऑफ नेटवर्किंग। लिंक्डइन में कनेक्ट करो, देयर आर सो मेनी जॉब पोस्टिंग इन लिंक्डइन नाउअडेज। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये, अ, एक कंपनी आया है तो प्लेसमेंट के लिए आप जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, तभी ये सारे पॉइंट्स करना है। बट इवन बिफोर दैट, फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आपका रिज्यूम एकदम परफेक्ट होना चाहिए, नंबर एक, नंबर वन। नंबर टू इज your social media presence. Okay, avoid all kind of uh, very personal level of postings which may give more wrong view about your personality. These kind of posting, मतलब सिर्फ मस्ती ही कर रहे हैं ऐसा फेसबुक में मत दिखाओ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और इंस्टा में मत करो, बी प्रोफेशनल। कुछ तो लर्निंग कर रहे हैं उसके बारे में डालो, या कुछ तो आपने सीखा। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ लर्निंग लर्निंग लर्निंग, बट मेक अ बैलेंस। सिर्फ एंटरटेनमेंट 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 नहीं, बिकॉज even if it is an entertainment, how you are presenting that photograph, that is also captured by the HR software nowadays. On that basis only it has been decided whether your resume, in all the leading companies, whether your resume is in or out. So be careful with your social media presence. If you're not a link, I know, I am believing and assuming that everybody who's there is having their own LinkedIn profile. So if not, please create it. If you have, revise it, revisit, revise it. With ChatGPT, you can prepare your own wonderful profile, create it, make it, and show that you are following some are good. For example, motivational speaker Tony Robbins, your national level पे अगर if you are fond of somebody, show that you are following somebody, right? And whenever there is a post, also try to give your own opinion. अगर आपको नहीं लिखने के लिए आ रहा है ना, चैट जीपीटी का हेल्प ले लो, लेकिन थोड़ा सा उसका हेल्प लेके आपका थॉट प्रोसेस उसमें डाल के पोस्ट करो, रीपोस्ट करो, आपका रिव्यू दो, बिकॉज इट इज ऑल ऑब्जर्व। इवन बिफोर यू एंटर द इंटरव्यू, अगर देखो आप इंटरव्यू में तो 5 to 10 मिनट्स ही रहता है, बट उसके पहले ही आपको लेना है कि नहीं लेना है डिसाइड हो जाता है। सो डू ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज इंटरव्यू में जाने के बाद वो भगवान पिच पे छोड़ दो कि आपने प्रिपरेशन कर दिया है, सो नाउ व्हाट्स गोइंग टू हैपन, God will see, and I am going to present myself, that's it. But before that, you can do all this preparation. Is it making sense, my dear students? Students, I need answer. Is it Yes, making ma'am. sense? Whether you are getting something which you really need? Yes? Okay. So, students, so these are some of my important pointers which you must do. रोने वाला रोते रहेगा, डरने वाला डरते रहेगा, बट वॉट एवर इट इज, कि हमने आपने वेस्ट किया टाइम, आपने टाइम वेस्ट नहीं किया, सिंसियर थे, सिंसियर नहीं थे, वॉट एवर इट इज, सेकेंड ईयर इस मूवमेंट से करो, बिकॉज फोर्थ सेमेस्टर में इतना कुछ ज्यादा नहीं रहता. सो प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर योर इंटरव्यू. फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर हैविंग too much of time. Still, if you have confusion ki whether I should go after for HR, like I am not a marketing person of HR. I will not do this because I believe it's all business. Because whichever you are fond of, आपका अंदर, ask yourself first. Then discuss with your alumni, not immediate alumni. मतलब लास्ट ईयर पास आउट हुआ वो गलत दिशा देगा, उसके साथ डिस्कस नहीं करना है. एटलीस्ट 5 years बिफोर का बैच जो रहेगा वो alumni के साथ कनेक्ट करो. आपके फैकल्टी मेंबर्स से पूछो कि मैम किसी का नाम दो, नंबर दो, पूछो, उनके साथ डिस्कस करो. और उनको पूछो कि अरे तुम एचआर में है, अभी कितना कमा रहा है, आपका करियर ग्राफ कैसा है. ओके, सो देन यू विल गेट अ
प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। देखो कि ये ऐसा नहीं एक सेशन में मनीषा मैम आके आपको पूरा प्रैक्टिकल इंस्टेंट नहीं दे सकते कि बट यू शुड और नॉट योर कॉलेज कैन ऑल्सो कैनॉट डू वंडर्स। व्हाट यू हैव टू डू यू योरसेल्फ, आपका इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट क्या है अकॉर्डिंगली ढूंढो, सब कुछ अवेलेबल है। सो नेटवर्क क्रिएट करो, देन यू विल, फिर नो बडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग अ गुड जॉब and starting, I will not say getting a good job, starting your progressive journey of your career, first step of your career. Is that clear, students? Okay, so and here I have given certain prompts for enhancing your career. You can you also find out कि देखो कि मैम आज के अवल में हमारा सेक्टर हमें पता है बीएफएसए में जाना है लेकिन पता नहीं कौन सा कंपनीज है। सर्च टॉप कंपनीज फॉर एचआर क्या क्या है, देखो स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर एचआर पूछ सकते हो चैट जीपीटी से, विच आर द सर्टिफिकेशंस अवेलेबल फॉर एचआर पूछ सकते हैं। हाँ, अगर इसमें सब स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट्स ऐसा है कि मैम हमें गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब जाना है तो आस्क which are the examination that is you have to give, is there any examination, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में है ना कि there are good jobs स्पेसिफिकली फॉर आईआर लेवल का, तो यू कैन सर्च फॉर दैट ऑल्सो। जॉब पोर्टल्स कहाँ कहाँ पे है जहाँ पे आपको जिसके बनाओ, आपको नौकरी.com तो पता है, उसके अलावा हजारों जॉब पोर्टल्स है। सो यू जस्ट आस्क दैट ऑल्सो फ्रॉम चैटजीपीटी एंड लॉग इन टू एटलीस्ट 2 or 3 जॉब पोर्टल्स। देन एचआर सॉफ्टवेयर, एचआर टूल्स क्या है, एटलीस्ट आपको वो इंटरव्यू में बोलने के लिए आना चाहिए। आर यू गेटिंग? दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच यू शुड नो। और इसके अलावा आपका इंडिविजुअली आपका प्रिपरेशन क्या करना है, इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ, तो डोंट स्पीक अबाउट व्हाट एवर यू हैव रिटन इन द रेज्यूम, स्पीक समथिंग। क्योंकि फॉर एग्जांपल कि आप बीबीए का सॉरी बीबीए किया है, एमबीए एचआर किया है, तो वो मत बोलो क्योंकि वो ऑलरेडी एचआर में इसमें लिखा है। You have to talk with a different way. I am an business management graduate with a post graduation degree of in a specialization in HR, because I'm extremely passionate to be with the people, be with people. You know, I in my college I have conducted an event where I proved, I have seen myself enjoying in coordinating, connecting with the people. तो अभी ये आप इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ ही बता रहे हो लेकिन आप आपका रिज्यूम में क्या है वो नहीं बता रहे हो, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आई अंडरस्टैंडिंग? नहीं तो क्या करते हैं कि जनरली इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ, आई एम भूषण राठौर, आई एम फ्रॉम भुसावल, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट, वो किसको नहीं चाहिए। अगर आप बोल रहे हो कि आई एम लीडर, लीडर के लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट करो। देखो कुछ एग्जाम्पल अगर सच में आपके पास नहीं है तो इट्स ओके कि थोड़ा सा आपका ये बोलो कि नहीं ये इवेंट में मैं लीडर था, आपका डायरेक्टर एंड फैकल्टी विल सपोर्ट, ओके, बट स्पीक विथ कॉन्फिडेंस, बट यू हैव टू प्रिपेयर। ऐसा नहीं है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में बहुत कुछ होता है, तो वो अगर आप प्रिपेयर नहीं करेंगे तो it will be like a poppet punching, like a parrot speaking it. I am this, I am did my MBA, I am doing my MBA, or I am passed out from Raigad Institute of Management, और मेरा मम्मी है पापा है, नहीं, all are there in resume. When you are talking about your introduce about yourself, speak that is not there in resume. Is that clear? Okay, so with this we'll go further. So these are how MBA HR students can stand out of the box. कैसा क्या कर सकते, that I have written. So this already I have spoken in my discussion. Okay, then yes, you have to, first year students continuously update and upgrade. Second year students, even after you pass it, you have to upgrade. अरे अभी एग्जाम खत्म हो गया, थियोरेटिकल नॉलेज का जरूरत नहीं है, ये गलत है कि थियरी का कुछ यूज नहीं होता, ये गलत है। अगर थियरी आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करके समझ के पढ़ेंगे तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू टिल द लास्ट ब्रीथ ऑफ योर लाइफ। बिलीव मी, विथ माई एक्सपीरियंस आई एम सेइंग दिस। फर्स्ट यू मस्ट हैव अ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। जो भी आपने अभी तक सीखा है, एचआरएम है, वो भी है, जो भी आपने सीखा है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस नॉलेज, मैं मेरे स्टूडेंट्स को सभी को बोलती हूँ कि दैट यू मस्ट हैव अ योर, सी देखो, आई एम नॉट सेइंग गो एंड परचेज न्यूज़पेपर, आपका इसमें इकोनॉमिक टाइम्स, आई एम सेइंग स्पेसिफिकली पॉलिटिक्स में क्या हुआ, इट इज नन फॉर बिजनेस, बिकॉज यू आर अ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट, फोकस ऑन इकोनॉमिक टाइम्स। इकोनॉमिक टाइम्स में अगर आपने ये किया
तो वहां पे बहुत सारे सेक्टर दिखाई देगा. विच एवर सेक्टर यू आर फॉन्ड ऑफ, गो इन दैट सेक्टर. एचआर में आज न्यूज क्या क्या आया है देखो, क्या हो रहा है मार्केट पे. अंडरस्टैंड, आई एम नॉट सेइंग रीड ऑल द न्यूज, न्यूज़पेपर एक दिन में पूरा पढ़ो नहीं बोल रही है, बट इकोनॉमिक टाइम्स में, इकोनॉमिक टाइम्स का ऐप है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसे डाउनलोड करो. उसके बाद उसमें जाके इंडस्ट्री करके रहेगा, तो इंडस्ट्री में दे आर डिफरेंट सेक्टर. सो रीड वन न्यूज. Instead of wasting your time in just scrolling the reels, see this. I know that it is very hard to leave that habit, but अभी नहीं तो कभी नहीं, you have to have some business knowledge. क्योंकि अगर रिक्रूटर थोड़ा सा ये रहेगा, खड़ूस रहेगा, तो वो कुछ भी सवाल पूछ सकता है. So you will be confident when you know. I'm not saying कि सब कुछ आता है. Even Manisha ma'am don't know anything. Not know anything, don't know many things, right? I don't know everything that is happening. मुझे तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, बट डजंट मीन कि कैन आई गो एंड से इन फ्रंट ऑफ अ रिक्रूटर, नहीं मुझे तो इंटरेस्ट ऐसा नहीं है. आई शुड हैव सम नॉलेज. आई गेटिंग इट. सो बिजनेस नॉलेज चाहिए. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थियरी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. मैन पावर प्लानिंग किया, मैन पावर प्लानिंग एक्चुअली कौन सा क्वार्टर में कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वार्टर है, फाइनेंशियल ईयर रहता है, April 1 से लेके March 31 तक फाइनेंशियल ईयर है, तो इसमें 4 क्वार्टर्स रहता है. तो किसी एचआर के साथ बात करो, अरे आप मैन पावर प्लानिंग कौन सा क्वार्टर में करते हैं, फर्स्ट Q1 में, Q2 में. मैन पावर प्लानिंग एक बार करके छोड़ देते हो या कंटिन्यूसली करते हो? आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज द एक्चुअल थिंग. अगर रिक्रूटमेंट में हमने पढ़ा है कि रिक्रूटमेंट, ऑन जॉब रिक्रूटमेंट ये होता है, ऑफ जॉब रिक्रूटमेंट ये होता है. एक्चुअली उस कंपनी में कैसा होता है रिक्रूटमेंट? वो लोग कैंपस में जाते हैं, या वो रेफरेंस लेते हैं, या इंटरनल चेक रहते हैं, या ये जॉब पोस्टिंग करते हैं पोर्टल्स में. हाँ, डिस्कस. तो एक कंसेप्ट को लेके वो एक्चुअली अभी प्रीवियसली कैसा हुआ था, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस. बट नाउ हाउ इट इज हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, हाउ इट हैज चेंज, हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो समझना इंपॉर्टेंट है. अगर बजट है, एचआर का बजट है, तो एचआर का बजट कौन सा महीने में अप्रूव होता है. देखो कि एक अगर कंपनी ने 10% ऑफ रेवेन्यू इंक्रीज करना है, अगर डिसाइड किया है, उसका रिपरकर्शन, दैट इज द गोल, दैट द कंपनी हैज डिसाइडेड फॉर दिस ईयर, उसका रिपरकर्शन will happen in every department of the organization. Do you all agree? Every department. So in the HR, अगर 10% रेवेन्यू इंक्रीज करना है, तो किस प्रकार का ये हो रहा है, what kind of impact it is creating in that particular department and how it is being done. समझ में आ रहा है क्या? वो समझ के लो. ऑटोमेटिक रहेगा तो हाउ इट इज डन, ऑटोमेटिक नहीं रहेगा तो कौन सा फॉर्म्स है क्या. सो दिस practical application you should know. And now you either directly discuss with some of the senior HR people. If your college is having, connect with some of the HR, you do it. Otherwise, you follow some of them in LinkedIn and discuss. You should do all of this before going for the interview. So the practical application of theory. Current affairs compulsory चाहिए, right? अभी recently वो express highway में 12 more than 25,000 vehicle got stuck day before yesterday only. So what happened? As a MBA student, what is your solution you want to give for that? See that मैं नहीं बोलूँ कि पूरा डिटेल में जाओ, बट मेजर थिंग देखना पड़ेगा. करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज ये होना चाहिए. And don't say कि I am an HR, then I am not going to talk about the percentage. You must speak about speak in numbers. अगर क्योंकि देखो मैं HR हूँ, मैं नंबर्स के पास मेरा अच्छा नहीं है, नो यू आर नॉट एक्सपेक्टेड, बिकॉज नाउ इट्स ऑल बिजनेस, सब कैलकुलेशन है. एंटायर डिसीजन इज बेस्ड अपॉन दिस मनी. ओके, बिजनेस इज अबाउट मनी. अगर मनी जनरेशन करने के लिए HR डिपार्टमेंट हेल्प नहीं कर रहा है, तो आप नहीं चाहिए डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन को. सो यू शुड नॉट से कि आई एम एन HR, मुझे फाइनेंस का आंसर नहीं आएगा. अगर आप HR है, मैं फाइनेंस स्टूडेंट्स का हमेशा बोलती हूँ, आप फाइनेंस है, लेकिन अगर आप ऐसा कंपनी पे जा रहे हैं कि जहाँ पे HR प्रोसेसेस चल रहा है, तो यू मस्ट बी इन अ पोजिशन टू टॉक वेरी फ्लुएंटली अबाउट लेबर लॉ एंड द परसेंटेज ऑफ ग्रेजुएटी एंड एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, सब क्लियरली बोलने के लिए आना चाहिए.
Similarly, even if you are an HR, if you are going to the engineering company, engineering का certain certain jargons you must know. Are you getting it? So that is how you should have a multi-dimensional approach. In short, you must don't say, "Okay, I'm HR, I will not do this." You must talk about strategy. You must talk about business. You should talk about customers. You should talk about value. कि अपना आपके वजह से उस ऑर्गेनाइजेशन को किस प्रकार से वैल्यू आप क्रिएट करेंगे, वो कॉन्फिडेंटली कन्विक्शन के साथ बताएंगे. 100% you will get the job. So this is multi-dimensional approach. So you must continuously update and upgrade yourself with all these 6 pointers. Okay. Then I'm a coach, right? So this is very important. अब ये मैं आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस लिखी हूँ. देखो क्या क्या क्वालिटी आपको बहुत जरूरी है. अब जितना भी मैं एचआर के साथ बात करती हूँ, दे से कि दीस आर समथिंग विच दे फील. अगर ओवर कॉन्फिडेंस, अरोगेंस, इंस्टेंट शिफ्ट, ओवर एक्सपेक्टेशन, ये सब इस जनरेशन का प्रॉब्लम है. आई एम नॉट सेइंग दैट इज वेरी बैड, इट्स गुड. But if you are like this, if you're a problem creator, organization will not expect you. So these are something which you should know. One is assertive. Be positive. Completely positive. मतलब पॉजिटिव का मतलब ऐसा नहीं है कि उधर आग जल रहा है फिर भी आप पॉजिटिव बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है. दैट्स व्हाट आई यूज द वर्ड असर्टिव. ना भी असर्टिव तरीके से प्यार से बताने के लिए आना चाहिए. So I, for example, if you are preparing for your interview, if you are doing your own work, अगर वो कोई तो आपको इंटेंशनली उसका काम दे रहा है, तो उसको प्यार से ना बोलने के लिए, सर आई रियली वांटेड टू हेल्प यू, आई वुड लव टू डू दैट, बट आई एम हैविंग माय ओन टास्क. So if you don't mind, may I complete my own task first? This is how. असर्टिव वे. डायरेक्ट ये नहीं कुछ नहीं कहा कि इंटरव्यू में मेरा ये बताना कि ये क्या है, क्या पैकेज कितना है, और मेरा लोकेशन बताना. मैं इधर से इधर नहीं आऊंगा, मेरे पास गाड़ी नहीं है. नो 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 नो, दिस इज ऑल रॉन्ग. आस्क देम, ma'am, is there an availability of a vehicle? As me coming from a rural background, immediately I may not be in a position to go for a vehicle. So this is how you should speak. Assertive way. ठीक है. Response. There are two things. One is reaction and response. Reaction देना बहुत आसान है. रिस्पॉन्स करने के लिए एक पॉज लेना पड़ेगा. छोटा सा पॉज लो, सोचो, उसके बाद आंसर दो. इवन इन इंटरव्यू समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि रिक्रूटर अननेसेसरली क्वेश्चन पूछ रहा है, गुस्सा नहीं होना है. टेक अ पॉज, टेक अ डीप ब्रीथ, देन डोंट रिएक्ट एट ऑल. ये लिख के लो. ये इतना आसान नहीं है, कभी कभी रिएक्शन हो जाएगा, इट्स ओके. पर्सनली हो जाता है, ठीक है, बट पर्सनली रिएक्शन नहीं कर सकते. सॉरी, प्रोफेशनली आप रिएक्शन नहीं कर सकते. इट मस्ट बी ऑलवेज रिस्पॉन्स. बिकॉज आप अगर एक कंपनी छोड़ के दूसरा कंपनी, इवन आप कॉलेज छोड़ के एक कंपनी में ज्वाइन हो रहे हो, वो कंपनी का कॉल आपको कॉलेज को, डायरेक्टर को, एचओडी को आता है टू नो अबाउट यू. आर यू रियली कैपेबल? सो दैट्स व्हाट इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स. अगर आपने रिएक्शन किया होगा, वो आपने बहुत अच्छा किया, 90% अच्छा किया, लेकिन एक इंसिडेंट में आपने किसी कलीग के साथ झगड़ा किया, बहुत ओवर रिएक्ट कर दिया, देन आप दूसरा कंपनी में जाएंगे तो इस कंपनी वाला वो उसके बारे में बताएगा, अरे उसके साथ उसने ना एक बार बहुत बड़ा झगड़ा किया. सो बी अलर्ट. मैं आप करियर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने के पहले ही आई एम गिविंग यू एन अलर्ट. ऑलवेज गिव रिस्पॉन्स. आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी इज मस्ट, इट इज नॉट एन ऑप्शन एट ऑल. देखो मैं आई एम सेइंग यू चैट जीपीटी, इसका मतलब ये नहीं बोल रही कि आपका थॉट प्रोसेस को बंद करो. चैट जीपीटी का सपोर्ट लो, बट कुछ से पहले आप इवन इन योर मोबाइल हैव योर ओन थॉट बुक, जिसमें आप अपना थॉट्स लिखो. सो यू मस्ट हैव दैट. देन ओनली you will remain as a human being. Otherwise, believe me, you will become a robot and nobody will value you. Then yes, कभी कभी आपको जो आता है वो ही आपका एचआर मैनेजर बोलेगा. कभी कभी आपको कुछ भी नहीं आता, लेकिन he will ask, expect you to do that. Even he might not know. Don't say no. Be agile and flexible for new learnings. Okay. Then people should know you. Your identification should be, he is a person of consistency in your organization. He is a person of commitment. अब इसके पास अगर मैंने एक
काम बताए ना, no matter what you will do. So this kind of thought process should be there with your colleagues in your organization wherever you exist. देखो in college मुझे पता है आपने ये किया हो, बंक किया होगा, यू नो मेनली एब्सेंट रहा होगा, सो मच ऑफ थिंग्स यू मतलब असाइनमेंट्स दिया, वॉट एवर इट इज, इट इज ऑल गॉन, कंट्रोल ऑल